हेंगो निंजा भाई कैसे हो वो? यो 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 बेरी। अरे एक आंसर पूछना था एक रोबोट से। मतलब क्वेश्चन ही पूछना था। ये क्या चल रहा है आपका? मेरे को ₹7 का बोलते हैं ये खेलने के ये आ गई ये। ऐसे जोकर भाई का तो मैं गलती से सचेत निकल गया। क्या बोल सकते हैं, सॉरी जोकर भाई। नहीं नहीं, नाइडा तो नहीं निकली है, पोस्टा थोड़ा चेंज हो गया मेरा। जो बोल रहे थे वो नहीं निकला। और मेरा दाखा पा गया तो 50 भूल गया भाई। यो मैं बोल रहा है आपका जो बोल रहे थे वो नहीं निकल, मैं गलती से दूसरा में क्लिक कर हो गया। क्या गलती से दूसरा कैरेक्टर में क्लिक हो गया मेरे को। मतलब? ये आप जो चाहते थे वो नहीं मिला बस उसका। किसमें? सही है। किस में, क्या गेंशिन में और 5 किस स्टार में निकला भाई? क्या मेरा? क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ जो गेंशिन आप वो पोस्ट था जो फ्री चाहिए था वो नहीं, मैं निकाला हूँ। ऐसा है क्या? नहीं नहीं, मैं निकाला वही निकाला हूँ, चिंता ना करिए। अरे कोई ना, अरे मैं वैसे भी डाउनलोड नहीं कर पा रहा यार। साव निकालो अब। तो साव निकालो अब। और तो मैं नहीं जाऊंगा भाई। और मैं भी नहीं जाऊंगा। ऐसा डॉक्टर पा जाए तो 50 पूर गया मेरा, देखो कब तक निकलेगा। कोई दूसरा गेम खेलना को तो बोलना, ठीक है? हेंगो जो एनिमे गेमर जो एबी वो, बोलते अरे हैं वो ये तो होता एनिमे नहीं है गेमर एबी वो मैं वही है भाई, जो कि भाई यही है वो चैट में जो तुम्हें वो निंजा भाई को कह रहे थे, यही है देखो। यही है द विक्टिम, नहीं दे द कंप्लीट, विक्टिम द कार्ड जो दे खेलते कंप्लीट हैं हम दोनों कंप्लीट के। नॉट विक्टिम। मैं जिंदा हूँ भाई, तुम जिंदा हो, हाँ? नाइस ब्रो। चैट देखिए ना, चैट वही है जो हम लोग के बारे में बोल रहे थे। अरे मैं खा रहा हूँ अभी। तो खाना खाते हैं, ओके ओके। एग्जाम खत्म हो गया जो का भाई? नहीं नहीं, आज कल होता है। मैं तो वीडियो ऑन करके रखा हुआ था, मैंने देखा ये 100 चेंज हो गया। वाह क्या बात। अरे टाइम तो है अभी बहुत, अभी टाइम है भाई इवेंट जाने में। स्क्रीनशॉट तो निकाल भी दिया जो भाई का, प्रचार भी कर दिया लेवल अब।
गलत किए आप, गलत किए आप, गलत किए, गलत है। मिस- मेरा ऐसा नहीं है कि फंक्शन डाउनलोड नहीं होगा, डाउनलोड तो हो जाएगा पर कोई दूसरा कुछ भी नहीं डाउनलोड हो पाएगा, रिस्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। आपका नया, हाँ उसको क्लिक करिए, वो वाला कैट, उसको स्विच करिए आप, स्विच करिए ना आप। क्या करना वर्थ इट अगर बताओ कि और गेम खेलूं या सिर्फ जेंसन खेलूं? और गेम जैसे क्या, मतलब जो मर्जी, या सिर्फ जो जेंसन? खेल लीजिए, मेरे ऊपर है, मैं अपना आपका काम मैं कर लूंगा। उस ऊपर से लेटे जाइए। आय हाँ हाय थोड़ा ऊपर और से क्या कर रहे हो, आय हाय हाय। बस। नहीं नहीं, ये तो मेरे को दोपहर को बोलते हैं विषय में आ जाओ, मैं विषय में बुलाया तो भी नहीं बताते कुछ, क्या अरे चलते। मैं बोलने आया था कि तुम गए हो, तुम सुना ही नहीं। वो तो वो हर बार तो बोलते हैं, तो क्या फर्क होगा भाई, पक गया भाई, कुछ नया लाइए भाई। सही में मैं भी पक गया हूँ, सुन सुन हाँ, अयून निगा। सुन 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 सुन, तो मैं भी बोरिंग टाइम लग गया अब, हर बार वही बोल। अयून निगा। वो आज कंग के को क्या हो गया है, वो लगता है देख रहे हैं नारुतो, सुकुना एंड गोजो सारे, मतलब कुछ भी। आ? क्या? कौन देखो? मैं सही के ऊपर से गया, मैं समझ नहीं पाया क्या कहें। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो भाई? भाई नारुतो गोजो सुकुना मैं समझा नहीं, क्या है भाई, क्या हुआ है मैं मैं समझ नहीं। सुन लिया, चिंता ना करिए, तो बहुत नहीं सुन, मैं सुन ली, चिंता ना करिए। हाँ तो नहीं नहीं तो ठीक है, वो आपका मतलब कहीं नहीं, वो इतना प्यार से बोला ना, वो हम सुन लिए। हरामी ही करता भाई, नहीं नहीं नहीं, वो हरामी है भाई, बहुत हरामी करता भाई, क्या बोल दे रहे मुंह। अच्छा वो अब उनका विषय नहीं है, अब मेरा विषय है। वो ऐसे बात नहीं है। वो ऐसे ऐसे ओपन फेज में नहीं बोलना चाहिए जो का भाई, गलत फील होता है। पता है निंजा भाई, दोपहर को अभी कितने बजे, 5 बजे लड़की तारने गए थे, लड़का तारने कुछ बाहर। भी बोल रहे हैं ना, कुछ भी। मेरे को बोल रहा है कि ये दे, ये लड़का पसंद आ गया भाई। मैं क्या बताऊं, अब बताओ। हाँ, मैं तो वीसी में था, मेरे को बुलाया, मैं आया, क्या करता हाँ हूँ हो, बताओ। बुलाया आप, बुलाए मेरे बोल को भाई, बुलाएंगे तो मैं नहीं कहाँ आएंगे बुलाया, क्या? उनको चाहिए। मेरे को बोलेंगे ना रोबोट, तो आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं बोलने अरे वाला था रोबोट मुंह। हमेशा तुम्हारा तरफ लेता है भाई, मेरी तरफ मैं अकेला बंदा, तुम दोनों मेरी ओह, तरफ। नहीं ये नहीं, तुम भाई तुम दोनों मिलके मेरे को मेरा वो नहीं वो कर दो भाई। अच्छा भाई, क्या बोलना चाहते हो जो भाई? मतलब तुम दोनों टीम अप करते हो यार। नहीं नहीं, कुछ मीनिंग थोड़ा चेंज कर रैगिंग कर लिए ना लेते हो भाई। भाई, बुली बुली कर ले। मैं कहा वहाँ हम कैसा बोल ले लो। हेंगो आई चिंग भाई, हाउ आर यू? पिंचो किस में यूज करने का सोच रहे हैं रोज, जो बिल्ड कर दूंगा मैं उसको। बेड पे। नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ अरे नहीं। हाँ तो वो हाँ पता ही है। पता है भाई, पता है भाई। क्या? भाई सर्जरी करा लेंगे, क्या दिक्कत, सर्जरी करा देंगे, दिक्कत क्या है, अभी एडवांस है सब कुछ, है ना? नो कमेंट, सॉरी। आई है ही नहीं तुम्हारे पास। ये बॉय। पर ये बात है, पर यार पेट नहीं भरा यार, इतना छोटा भाई, थोड़ा सा भरा होना चाहिए था। नहीं नहीं, बहुत छोटा यार वो,
देखो वो वो पानी में गुम हो गया भाई, मैं धोते धोते वो चला गया नाली समझ से, रहा क्या समझ करूं। रहा। कोई ना, मिलते हैं कल फिर। कल खत्म हो जाएगा एग्जाम। एग्जाम है भाई, फिजिकल फिजिकल का है भाई, फिजिक्स का है अच्छा एग्जाम कल। फिजिकल, ओके ओके, फिजिकल फिजिकल। हम्म। हाँ बोलिए बोलिए, आगे आगे आगे। मुंह में ले ले। अरे बीसी हमारा है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ा अरे कोई दिक्कत। हमारे कौन क्या कौन बोल रहा है, बैंकर मुंह में दे दूंगा। बोलिए बोलिए, आगे बोलिए बोलिए। अच्छा समझ गया अच्छा समझ। समझ गया, आज समझ गया क्या बोलना समझ गया चाहता, समझ समझ गया। गया। समझ गया हाँ समझ गया। ठीक है ठीक है। ठीक है जो रोबोट भाई आपको, रोबोट आपका जो। अरे वो करते तो है। सुनो सुनो, क्रोम पे जाओ, इनको इनकमेटो जो है वो मोड ऑन करो और सर्च करो जो मैं बोला था। वो पोकेमोन पोकेमोन है ही सर्च करो, इनकमेटो ऑन करके मिल जाएगा तुमको थ्योरी, है ना निंजा भाई। थोड़ी से ज्यादा प्रैक्टिकल में मजा आता है भाई, क्या थोड़ी थोड़ी देखे। हाँ मैं तो प्रैक्टिकल एग्जाम के ही बारे में बोल भाई रहे हैं। तुम लोग तो ले चुके हो भाई। आई एम किड भाई, थोड़ा सा वो रखो, तमीज रखो। मैं बच्चा हूँ। ओह बच्चे, ओह माय गॉड। अरे उससे कहीं, हाँ से ढक के, अरे ऊपर से ढक। ऊपर से क्या नहीं। अरे ऊपर से उसको कहिए ना, उस ट्रेक, उस जो बैट उसमें है, उसको बैठ थोड़ा के उधर करिए। भाई एम्बर यूज करते ना। एम्बर यूज करो, एम्बर। हाँ निगाह निगाह से निगाह हो जाता है। खाने का, खुजाने का, सो जाने का। गुड नाइट। चलो एंजॉय करो, मैं जा रहा फिर। तो क्या, तो को मोगो बोंग Have रहे fun हैं, भाई। नारुतो है मुंह में जाएगा, लो तुम भाग लोग जाएगा को भाई। समझिए। ये क्या लिख रहे हो तुम। अरे मेरे को ऊपर से पूरा पढ़ना पड़ेगा भाई। नहीं भाई, नारुतो नहीं आना होगा भाई। गोजो से नारुतो नहीं आएगा, डोंट वरी। भाई तुम इनका फाइट को छोड़ के तुम्हें मुंह में लेना है तो। हेलो हेलो। मेरे को बोल लो क्या, मैं क्या बोला। अच्छा मैं बोल रहा हूँ, तुम उनके फाइट के वो गोजो और उसके फाइट में इंटरेस्ट मत दिखा के तुम मुंह में लेना है तो बताओ। वही तो। देखो तुम हमारा ले लो मुंह में, निंजा भाई तुम्हारा ले लेंगे, दिक्कत नहीं है। ठीक है तुम। जिसको जो सोच रखने दो भाई, मैं कुछ नहीं फर्क होगा मेरे को। क्यों भाई। निंजा भाई फक यू। चलो चलो, फुल एंड फाइनल में जा रहा, बाय बाय।
गुड नाइट गुड नाइट। अरे अब उसको बैठाइए, उसको ढक्कन मारिए, बस हो गया। ओ करिए ना वो, अरे हो जाएगा। अरे उसने नहीं करिए, गलत कर रहे हैं आप। अब इसको करिए, उसको टच करिए। वो नोटो को तो बाबा हाँ को उसको, तो मैंने अरे बहुत ऊपर मदारा को हरा वो नोटो को तो माना बट यहाँ मादरा को हराया है भाई। नहीं सुनो, मैं तुम्हें बताऊं, गोजो जुजुत्सु काइसन के वंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है, कर्स एनर्जी ये सब की वजह से, बट नारुतो वंग में वो यूजलेस हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसके कर्स यहाँ काम नहीं करेंगे। देखो सब अपने वंग में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट दूसरे के वंग में जाकर वो वीक हो जाएंगे। जैसे नारुतो के निंजुत्सु गोजो के वंग में काम नहीं करेंगे, गोजो के कर्स नारुतो के वंग में काम नहीं करेंगे, तो फिर यूजलेस है ना। तो जो गोजो नारुतो के वंग में गया इन्फिनिट वॉइड करेगा, ठीक है, अगर वो वॉइड क्रिएट करेगा होगा ही नहीं, क्योंकि वो कर्स एनर्जी से वॉइड क्रिएट करेगा, और कर्स एनर्जी काम ही नहीं करेगी, क्योंकि उस दुनिया में कर्स एनर्जी का नाम ही नहीं होता, कुछ है ही नहीं कर्स एनर्जी। वहाँ पे से निंजुत्सु या फिर तुम्हारे पास केके गेंका है, दैट मीन्स शारिंगन या फिर ब्याकुगन या फिर जोगन, ऐसा कुछ होना चाहिए ना तुम्हारे पास। और तुम्हारे गोकू कह रहा हूँ, ठीक, गोजो के पास है ही नहीं है, तो कैसे यूज करेगा वो। अपने वंग में स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं बट दूसरे के वंग में नहीं, अंटिंग वो गोकू किसी के भी वंग में ऐसे तैसे कर देगा। अरे इतना इजी है भाई। अरे उसको, अरे तो क्यों उधर उसको लेने गए, अभी उसको ऊपर करिए आप। बाबा का आप यूज ही नहीं किए अभी, उसको यूज करिए, रैबिट को। हाँ ऊपर, हाँ नीचे करिए, हाँ नीचे करिए, बस हो गया, जाइए, हो गया। फायर गेमिंग, हैंग ऑफ फायर गेमिंग भाई, हाउ आर यू भाई, नाइक खोपेंगे तो क्या कह रहे हो तुम भाई। गोजो एंटी उसके फैन, बिकॉज गोजो अभी फेमस है भाई। गोजो के फैन सीरियस नहीं बोलूँ, देखो कुछ एनिमे के फैन बेस पे ना कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके फैन बहुत टॉक्सिक होते हैं। प्रीतम मंडंग, हैंग ऑफ प्रीतम भाई कैसे हो। देखो गोजो के फैन ना थोड़े से टॉक्सिक हैं भाई, सीरियस नहीं बोलूँ मैं। उसी टाइम समझिए गोजो के फैन कितने टॉक्सिक है जब इन्होंने गोजो के क्रिएटर को धमकी दे दिया ये कह के कि भाई तुम गोजो को जिंदा करो वरना तुमको मार देंगे। मतलब जिसने वो मांगा लिखे, जिसने वो एनिमे बनाया, उसको ही तुम धमकी दे रहे हो। अबे तुम उसको मार दोगे तुम्हारा जुजुत्सु काइसन खत्म हो जाएगा पूरा, तुम कोई राइटर ही नहीं है। हमें बोला ठीक है, एलिट और कितना है, एलिट का क्लास 3 का 6 एपिसोड है क्लास में, एलिट कल नहीं, सीजन 3 का 6 एपिसोड है, वही पूछना। पहले तो कील एक्टिवेट कर लीजिए, वहीं से होता, नीचे से होता, ऊपर क्यों गए आप उससे। I am not sure who wins this fight among Gojo have infinity hacks which could decide the match already, but Brian mode is एक्चुअली देखो मैं वही बोल रहा हूँ, गोजो जो है ना वो अपने वंग में काम करेगा, मतलब जुजुत्सु काइसन के वंग में,
क्योंकि इन्फिनिट वॉइड जो है वो उसमें काम कर जाएगी, बट दूसरे वंगड में थोड़ा ना काम करेगी वो। हिज कॉम्बैट स्पीड, वही क्या मैं यही बोलूंगा तुम्हें भाई। देखो यहाँ पे ना हम किसी की स्किन यूज नहीं कर सकते, हम सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ पे ही उनको जज कर सकते हैं कि गोजो की फिजिकल स्ट्रेंथ और नारुतो की फिजिकल स्ट्रेंथ में कौन। जैसे कि मैं अगर नारुतो को गोजो के वंगड में लाऊंगा ना, मतलब दोनों नारुतो गोजो को एक साथ रख दूं मैं ऐसे वंगड में जहाँ पे इन दोनों की कोई भी पावर काम नहीं करती, सिर्फ इनकी बॉडी और कैपेसिटी पे ही डिपेंड करता है, तो रॉक नी इन दोनों को बीट कर जाएगा, क्योंकि रॉक नी की पावर जो है वो इन दोनों से स्ट्रॉन्ग है। ब्रो लाइव पे आवाज आ रहा है, जा रहा है पग भाई, जो देख रहा है निगा भाई। भाई आवाज आ रहा है, बता ही नहीं भाई तुम लोगों ने भयंकर। निंजा भाई फक यू भाई, यू निगा भाई, निंजा यू निगा भाई, बताना चाहिए था भाई आवाज जा रहा है। यू निगा भाई, मेरे को कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है उनका बात में, अब मजा नहीं आता मेरे को। तुम फालतू को वेस्ट एनर्जी वेस्ट करो। ओए हाय साइतामा भी किसी के वंगड में आसानी से ऐसी तैसी कर सकता है। हाँ वही क्यों ना, साइतामा गोकू इनकी ना फिजिकल स्ट्रेंथ में, मतलब सुपर सेन एक साइड रख दो, बट उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ देखो ना गोकू की। गोकू बचपन में जब वो छोटा था तब उसने सी को स्विम करके गया था इतने कम टाइम में, तो उसकी स्ट्रेंथ देखो कितनी ज्यादा होगी। Are you talking about Goku, right? Yes, bro. Sonic bro, welcome back. गोकू और साइतामा के अलावा भी बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स है भाई। जो देखा तुमने, जो बिजार एडवेंचर मैं वर्ड भाई मैं टंग ट्विस्ट हुई, एडवेंचर मैंने नहीं देखा भाई। तो हे नारुतो लॉन्ग टाइम नो सी भाई, नारुतो वापस आ गया भाई सोनिक ब्रो। आज तो लोग आ रहे हैं, सही है भाई। मेरा तो 40 का मैंने खाना नहीं मेरा। हैंगो EI नो ब्रो हवा एसियानो भाई, क्या है मैं प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रहा इसको। इमोर्टन किंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मे बी सुपर सरपास गोकू ब्रो, आई डोंट नो भाई, मैंने इमोर्टन किंग के बारे में नहीं जानता, सॉरी मैंने देखा नहीं है एनीमे। इमोर्टन किंग अच्छा है, मजा आता है। एक सीजन देखा, अभी 3 सीजन है उसका। The hero's valor ripples through his robes. मैं जानता हूँ मेरे दोस्त देखते हैं, मैंने नहीं देखा भाई, सॉरी भाई। मैं सीरियसली बात कहूँ, एनीमे कंपेयर करने से अच्छा एनीमे एंजॉय करो यार। बिन बाद में कंपैरिजन से कोई यूजनेस है भाई, कोई पॉइंट बनता नहीं उसका। कंपेयर करके तुम क्या ही करोगे ना, तुम उसकी
राइटर को चेंज कर सकते हो, ना तुम एनिमे की ग्राफिक्स चेंज कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में कुछ ना है, तो उससे कोई एडवांटेज है नहीं कंपेयर करने का। बस एंजॉय करो शो को। जोजो को पूरा यूनिवर्स कुछ बंदे सोंगो कर सकते हैं, काफ़ी सारे मैंने नहीं देखा भाई। अच्छा जोजो को ना, जोजो विज़ार एडवेंचर मैंने देखा नहीं, मैंने सिर्फ देखा है कि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा क्या मतलब वो स्ट्रॉन्ग है। मैंने एनिमे वो देखा नहीं, एक भी एपिसोड नहीं देखा उसके, मैंने बस शॉर्ट्स देखे हैं। सीरियसली वो देखो, एनिमे कंपेयर करने से एनिमे को चुपचाप इंजॉय करो, सब अपने वक्त में डोमिनेट कर सकते हैं। आई मीन गोकू बहुत स्ट्रॉन्ग है, नारुतो वक्त में आके भी वो शायद स्ट्रॉन्ग अपने आप को प्रूव कर पाए, बट ओह शिट मैं क्या यूज़ करूँ, किस कोस्ट पे ये नहीं पता। इसका अच्छा वो है, पॉइंट आगे कर देते हैं, अब उसमें ज़्यादा मिलता है। अच्छा हुआ, अच्छा नहीं केट, अच्छा इसका थर्ड ये मेरा इतना गुस्सा है ना, राइटर लाइन का लास्ट में नहीं दिया भाई, थर्ड में घुसा दिया पूरा कट सीन, मजा नहीं है। नहीं मैं बोल रहा जो स्टोरी का कट सीन था ना, मेन कट सीन, वो थर्ड स्टोरी में दिखा दिया। यही गुस्सा है मेरे को। कितना में निकलेगा रोबोट बताइए उनका? नहीं डा 50 तो खींच लिया भाई। इनके पास उस साइड में वो है नोबल, हाँ ये भी होगा। Bro, you can't because Naruto Prime is so much powerful universe. भाई नारुतो प्राइम देखो, नारुतो प्राइम की बात नहीं है भाई, मेन चीज़ है हर कोई अपने वक्त में स्ट्रॉन्ग होता है, उसके पीछे ये रियलिटी है। निंजस्सू हर जगह काम नहीं करेगा, गेंजस्सू देखो इटाची को बहुत स्ट्रॉन्ग कहते हैं भाई, इटाची बहुत स्ट्रॉन्ग है। इटाची ने ओरोची मारू को मार रखा है, बट और ओरोची मारू जिराया से जीत गया, ठीक है, बट जिराया पे इटाची का जो मेन अटैक है वही काम नहीं करेगा, उस पर गेंजस्सू काम नहीं करेगा जिराया पे, क्योंकि उसकी ये कौन है, उसकी जो चक्रा पॉइंट्स है वो सींग है। तो अब तुम ये कहो कि जिराया ओरोची मारू से हार गया और ओरोची मारू को इटाची ने हरा दिया, इसका मतलब वो जिराया को भी हरा देगा, तो इसका पॉइंट नहीं बनता ना भाई, बिकॉज वो उसके जो जुत्सु है, जो उसकी कैपेसिटी है, जो मेन उसकी स्ट्रेंथ है, वो उस पर काम ही नहीं करेगी जिराया पे इटाची की, मतलब वो उसको सपनों की दुनिया में जो उसकी है उसमें फंसा ही नहीं पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग तुमको जज करना पड़ता है किसी एनिमे को। लोग तो कुछ भी जज करवाते रहते हैं भाई, उन सब की बातों में ध्यान मत देखो। बाकी देखो जो शॉर्ट्स से देख के एनिमे, अभी जिन्होंने शॉर्ट्स से देखना स्टार्ट किया है ना, तो उनसे तो दो ही रखो भाई, वो कुछ भी बोंगते रहते हैं, उनका तो कुछ भी सेंस नहीं बनता। तो कौन है भाई, ये कौन है जो वंडे में आना चाहता है मेरे? एक तुम में से कोई है क्या ब्रो? अरे सॉरी, कोई है क्या तुम में से? ब्रो दैट्स मी। अरे जो आ रहा था, अरे सॉरी ब्रो, मैं क्वेस्ट में हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं क्वेस्ट हो जाऊँ तो उसके बाद आ जाना। अरे तो मेरे साथ पूछ, मैं तो ऑनलाइन हूँ, बैठा हूँ भाई। निंजा भाई से पूछूंगा कुछ पूछने, तो एक्चुअली मैं क्वेस्ट में ना, इस वजह से वो और आईडी में नहीं बुला सकता। एनिमे गेमर वो मैंने DBZ 2009 में देखता आ रहा हूँ। नहीं, मैं DBZ का तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं DBZ मैंने फोकस करके कभी ये नहीं किया कि हाँ भाई DBZ में देख रहा हूँ, मुझे डेट याद हो।
क्योंकि वो मैंने बचपन से देखा, वो बचपन में मैंने कब स्टार्ट किया था मुझे ये याद नहीं है। नारुतो मैंने 2000 शायद 14 या 13 में स्टार्ट किया था, जब मतलब नारुतो एज में एनिमे के मैं एक पॉइंट नहीं दिया भाई, एक भी पॉइंट नहीं आया मेरे पास, ये क्या नीचे है। नारुतो फर्स्ट एनिमे जिसको मैंने एज अ एनिमे देखा था, बाकी सबको तो मैं कार्टून समझ के देखता था। तुम समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब मेरी नज़रों में एनिमे एक टाइम पे कार्टून था, पर जब मैंने नारुतो फर्स्ट टाइम देखा ना तब मुझे मैंने एनिमे समझ के देखा उसको। भाई ये बंदा को मैंने ठोका भाई, वो नहीं उड़ रहा, मैं उड़ जाऊँ यार, ये क्या गिनीच है भाई, गेम में कुछ गिनीच होता है क्या? अच्छा कॉप में खेलने के चाहता था वो। अच्छा कॉप में तुम्हें खेलना है क्या? भाई वहाँ कोई नहीं है, जहाँ मैं गया हूँ ना वहाँ कोई नहीं था। ये देखो भाई, ये भाई मैं इसमें नहीं, मेरे को बताइए को मोड गेम ना बहुत गंदी टीसिंग इवेंट्स में को ये बेकार थे भाई। उनके पास एक तो पिंग उनकी अच्छी होगी बाय द वे, दूसरी बात भाई वो एक तो एशिया सर्वर जो है ना उसमें जो यहाँ के ना चाइना साइड के बंदे उनकी बहुत अच्छी पिंग आती है। आप किस में देखते हैं ऐसे एनिमे वॉचर में? एनिमे वॉचर Zo.2 पे देखता हूँ मैं। आई मीन Zo.2 का मेन तो ऐप तो आता है भाई, उसमें तो नहीं देखता। ऐप में नहीं देखता मैं, वेबसाइट पे तो। ऐप में कौन भाई यार, कौन मांग रहा है भाई? हो तुम तो पीछे ही पड़ गए यार, मैं सबसे कम पॉइंट पे हूँ, मैं बात करने में पॉइंट ही नहीं ठका के मैंने भाई। ये बीमारी हो रखी है भाई इन सबको। बता दे जब खेलना तो भाई ये देखो भाई, मुझे पॉइंट नहीं मिलना भाई, मैं सीरियस नहीं बोलूँगा, मुझे पॉइंट नहीं मिलना। ये देखो मुझे पॉइंट मिल ही नहीं रहा है, धक्का मारता है सब। धक्का नहीं, मेरे मैं पॉइंट ले रहा हूँ, वो पॉइंट काउंट नहीं हुआ मेरे, ये मुझे समझ नहीं पॉइंट। साइतमा 168 भी आ जाए तो भी बच्चा है। किसकी बात करो तुम सब भाई? मैं नहीं कूदना चाहता, अगर तुम दोनों किसी चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हो तो कहते हो। बेसिकली मैं ये बताऊँ ना तो कम से पूरा बात नहीं करिए, जो बात कर जब आपको पूछेगा तो वो करिएगा। अगर मैं चैट पढ़ रहा था ना, मैं चैट एक तो मैं दूसरे फ़ोन में चैट पढ़ता हूँ ना, तो मैं यहाँ से ध्यान हट जाता है भाई। बहुत गंदा हुआ, मैं मैच बहुत गंदा गया। फर्स्ट कप पाजी में गेमिंग आ चुका है। मेरे को गामिंग नहीं मिला भाई अभी तक, 73 की पिटी एक भी गामिंग नहीं है। उनको मिल गया है, उनका आईडी में मिल चुका है। आई मीन 73 पिटी किया मैंने इसी बैनर पे, एक भी गामिंग नहीं आया। फाउजान C6 हो गई। कितने का 73 का पीटी किसमें? हाँ, मेरे उसमें मतलब मेन आईडी में, इसमें थोड़ा ना, ये तो नो विषय। हाँ तो उसमें क्या थे इवेंट खत्म कर चुका हूँ मैं उसमें पूरा भाई। उसमें गामिंग नहीं मिलना भाई मुझे। कॉल नहीं मिला था, मैं वो हाँ भाई तुम्हें पता है अकूटो साई एंड वांगनिन एंड आनोस कौन है? आनोस वंगडिगो। अगर आनोस वंगडिगो के कहे हो द मिसफिट ऑफ डीमन तो मैंने वो देखा हुआ है, बाकी दोनों नाम से मुझे याद वो भी अच्छा है। एक्चुअली मुझे ना एनिमे कैरेक्टर्स के नाम याद नहीं होते। आई मीन मैं याद नहीं रखता। हाँ सही तो बोल रहा है, बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि बहुत सारे एनिमे माइंड पे आ जाते हैं। अरे आप मेरा एनिमे देखिए, मस्त एनिमे में फर्क वी नहीं किया मूवू नाइट नोवंग में अपने एक बिंग से पूरा एग्जिस्टेंस खत्म कर देता भाई। बेंटेन का नाम सुना है? बेंटेन तो सब देखा है बचपन से। और देख लो गो को काफी है भाई। सुनो अगर बेंटेन याद है भाई, बेंटेन एक तरीके से एनिमे नहीं है बट भाई बेंटेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, हम उसको हंके में कहते हैं। कई बात तो ना एलियन एक्स से भी पावरफुल एलियन है बेंटेन के ओमनीट्रिक्स में। एजमत एक पता नहीं एजमत ने या मैन ऑफ क्या था उसकी कंपनी का नाम मैं भूल गया, उनमें से किसी के मैंने उस पर देखा था, ट्वीट पे या कहीं पे देखा था मैंने कि उससे भी स्ट्रॉन्ग है, बट वो अभी बैन हो रखा है क्योंकि अगर वो एक्टिवेट होगा तो बैन उन वंग को ख़त्म कर सकता है अर्थ को एक बार में, अगर बाय मिस्टेक नहीं, अगर उससे कोई भी मिस्टेक हुई तो। अननोन आदमी रेडी कर दे। ओ साइतमन, और एक सेकंड, हम दोनों एक साथ खेल सकते हैं क्या ये इवेंट? का वो मेरे वंग में आ गया तो हाँ तो मुझे बताया क्यों नहीं? ओ साइतमन ने अपने कॉप में करेंगे तो कॉप में हो जाएगा भाई। अपने आदि जुपिटर खत्म कर दिया भाई। आ सकते हो भाई, अब तुम आ सकते हो।
आधी जुपिटर खत्म कर दिया था साइतामा ने यार। नहीं भाई मैं नहीं देखना चाहूंगा भाई वो अबे यही दिख भाई, वहाँ कोई नहीं है। आत्मा वात्मा है क्या यहाँ पे कोई? किससे कौन मुझे धक्का दे रहा है? उनका पिंग अच्छा है भाई, मैं सीरियस नहीं बोलूँगा, उनका पिंग अच्छा है। सब छोड़ो, ये देखो मैं गाड़ी बन के घूम रहा हूँ, मेरी छुक छुक गाड़ी किसी काम की नहीं आ रही वहाँ पे। ये देखो वहाँ ये सांगा कहाँ से आ रहा है भाई? वो भाई खजाना है यहाँ पे। भाई ये देखो भाई, उनको कितनी भाई उसकी गाड़ी की स्पीड में से ज्यादा क्यों है? कौन सा पेट्रोल डालना है वो गाड़ी में? भाई अब्यूज कर दूंगा गुस्से में। ये देखो भाई उसकी गाड़ी कितनी स्ट्रॉन्ग है, मेरी गाड़ी क्यों कमजोर है भाई? ये सब मेरे को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मैं अच्छा मैं हाईएस्ट हूँ ना तभी। ये भाई वो भाई मेरी गाड़ी कमजोर क्यों पड़ी है सबके सामने? मेरी गाड़ी क्यों कमजोर पड़ गई है? आगे कोई चढ़ गया भाई मैं आगे होता नहीं हूँ कि मेरे को पीछे कर देते बंदे यार। सब भाई बहुत ज्यादा आगे चल रहे हैं। टैंगलिंग बहुत आगे चढ़ गई भाई। अब एलान टैंगलिंग भाई वो मैं पॉइंट उठा भी नहीं पाया। एक सेकंड दे भाई मैं 60 प्लस नहीं जा पाया यार। छोटे भाई वो 223 मैंने वन पीस और नारुतो और डीवीडी हंटर एक्स हंटर नहीं देखा मैंने। मेरी बकेट लिस्ट में एनिमे की, बट मैंने देखा नहीं है। भाई मैं बहुत सारे एनिमे ऐसे ना जो मैंने रखा है बट देखना बाकी है। मैं वही करने जाऊँ भाई, वो दूसरा बंगा कहूँगा। ये इसमें बहुत कम पॉइंट होंगे। और सम हेंटाई नहीं भाई, हेंटाई में नहीं देखता। मैंने नाम बहुत सुने हुए हैं बट देखता नहीं मैं। बिकॉज भाई देखो हेंटाई में वॉइस ओवर जो होता है ना, वो एक मेन वॉइस ओवर होता है, अगर तुम्हें पता हो तो। वॉइस आर्टिस्ट जो होता है उसका मेन होता है। तो इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, तुम समझदार हो। मैं भी आऊं आपके साथ? आ सकते हो, को में आ जाओ भाई, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे पता नहीं था को में ये हो सकता है, नहीं तो मैं तो स्टार्ट है। सिंचो यो बॉय बोला आ जाओ, तुम भी आ जाओ। कोई आ गए थे, किसको आना था ना। वैसे कपड़े चेंज हो गए। सिंचो आर्टिफैक्ट फास्ट इक्विप कंफर्म ओके। आर्टिफैक्ट अबे कपड़े कहाँ हैं यार? दैट गरीब नहीं अमीर है तू। ये पहन इसका भाई सही में ये। अरे फूरिना के आउटफिट है भाई, सस्ता फूरिना है मेरे इस बंदे में। वो तुम क्यूब जानते हो? क्यूब भाई, रूबिक्स क्यूब की बात करोगे तुम? भाई मैं नाम याद रखने में उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं पहले बता दूं। नाम याद नहीं रहते हैं। आप कुछ और एनिमे आप कुछ देख रहे हो? बस हो गया काफी। अभी तो मैं देख रहा हूँ भाई एनिमे। मिसफिट ऑफ डीमन किंग का सेकंड सीजन देख रहा हूँ और डुगारा का सेकंड सीजन खत्म नहीं किया। मिस्ट्रेस ऑफ डीमन अरे मैंने बीच में वो स्टार्ट कर दिया था ना, रिंग आई फॉर वो नाओगामी। एक तो आप एक चीज देखिए भाई, दो चीज देखे में मजा नहीं आता। नहीं मैंने नाओगामी पैंग खत्म किया, फिर वो देख पैंग नहीं मिसफिट ऑफ डीमन किंग का मैंने फर्स्ट सीजन खत्म किया, फिर मैंने दूसरा स्टार्ट किया। मैंने पीछे देखने दे इनको मैं अच्छा भूल गए। मैंने एक बार में नहीं स्टार्ट किया, मैंने धीरे-धीरे स्टार्ट किया है। कब तक निकल जाना इधर आ जाना भाई। नहीडा कम होम बाबा 38 और बाबा रे बा। मुझे कहीं नहीं पता चला नीसा सुमेरु से है भाई। वो ऑब्वियसली वो किताबों में घुसी रहती है तो सुमेरु से ही होगी वो पढ़ाकू लड़की भाई।
बच्ची लड़की निंजा भाई गाड़ी को 51 का तो रोमेरो देखना ने अपने पड़ेगा आँख कहीं बंद और। करके भाई भाई तुम्हें पता है ना रोमेरो की देखिए बात मैं नहीं मारूंगा करूंगा तो रोइएगा नहीं प्लीज, ठीक ना। उसने वंड को तुम्हें मुझे डिफेंड करना है, तुम्हें मुझे मारना नहीं है। उसने पूरे मैं अर्थ defend को ही पूरे करूंगा। यूनिवर्स को वापस क्रिएट किया है एलियन एक्स ने बेन 10 के। तो सोचो वो कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अरे ये अरे लगा दिए बहुत। और तुम्हें पता है इसमें ड्रैगन बॉन्ग जी में ये पावर सिर्फ 2 बंदों के पास होती है, 2 या 3 बंदों के पास। एक तो डिस्ट्रॉयर का जो इंजन होता है उसके पास, दूसरी जेनोसामा के पास रिवर्स करने की। सच को मेरू नोवन बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, स्ट्रॉन्ग तो है भाई, पर अपने वंग में स्ट्रॉन्ग होता है भाई हर कोई। वही मेरी बात मतलब मेरी थ्योरी तो आके वहीं टिक जाती है ना, क्योंकि मेरू की जो पावर है हो सकता है वो नारुतो वंग में काम ही ना करे, उसका बैटरी खत्म हो जाए उसके टॉर्च का। बात तो वहीं आके टिक जाती है ना सारी। आउच। डोंट हेड पे मत जा भाई। निंजा भाई मुझे सीरियसली मुझे धक्का दिया तुमने यार, अपने दोस्त को गद्दारी कर रहे हो निंजा भाई। ठीक है जाइए भाई, ऐसे मेरे को कुछ नहीं करना है यहाँ पे, मेरे को बस मस्ती उड़ाना है मुझे बस। बचाओ, तुम बाकी लोगों को मारो। तुम बॉडी गार्ड हो भाई, तुम हुड़ दबंग हो भाई तुम यहाँ पे। तुम पता क्या करो, वो वही तो अभी तो मैं तुम्हें आया पीसी वाले बंदे ना ये, तुम टोंगियांग हो और उसके बाद डांस को हटो मेरे को जाने दो पहले। इधर इसमें आई आप मार दिया मेरे को। भाई। वो पहले ही मुझे धक्का देके भगा दिया भाई उसने। जिसमें कम हाँ तो उसमें जा रहा है। ये देखो भाई तुम इस पे होगा। अरे कहाँ दिखता है नहीं पीस। यार ये पीसी वाले बंदे ना निंजा भाई, क्या कहोगे तुम? चल निकल सर से आ जाऊंगा। चल निकल मेरे देश से गद्दार। भाई वो वहां पे बैठा हुआ, मैं वहां नहीं जा रहा। अबे यार गायब हो गया। कोई ना तो जीरो में भाई मेरे को एक बात बता, मैं गाड़ी बन के बैठा हूँ, इसकी गाड़ी मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या? कैसे वो ठोक रहा है भाई मुझे? अरे स्पीड होता है। इधर आइए, कोई है इधर आ जाओ, खाली है यहाँ पे। I mean, अब क्या ही एडवांटेज है भाई, अब तो कोई एडवांटेज नहीं है। साइदामा के पास स्ट्रेंथ है भाई, गोकू के पास भी स्ट्रेंथ है भाई। साइदामा गोकू की मेन अगर देखो किसी एनिमे को जज करना ना, किसी एनिमे एमसी को, तो तुम ऐसे जज कर सकते हो कि वो बिना पावर्स के कितना स्ट्रॉन्ग है। बिना पावर के जो स्ट्रॉन्ग है ना वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली उसने बिगिनिंग करके डिस्ट्रॉय किया है, दैट मीन्स उसकी पावर यूज हुई है। फिजिकली कितना स्ट्रॉन्ग है वो, क्या वो पंच करके एक अकोट तो आपको अभी जितना एनिमे बताया उतना देखोगे उसके बाद में और बहुत सारे एनिमे हैं भाई। मेरी एनिमे लिस्ट बहुत बड़ी है भाई, मैं एक एक करके सारे एनिमे खत्म करूँ पहले अपने। हाँ बता अपना पहले वो वाला एक एनिमे तो मेरा सजेस्ट करते देख लीजिए, एक एनिमे बस। हाँ मैंने बताया ना परसों स्टार्ट होगा, मतलब कल स्टार्ट कर दूंगा, परसों तो हो गया। आज मैं एक एनिमे खत्म हो जाएगा, कल में वो स्टार्ट होगा। I mean, ये भी कंप्लीट हो गया। कितना चाहिए पॉइंट? डन हो गया। अब मैं ये इसे को मोड में नहीं कर सकता। हाँ ठीक है ना, मैं जा रहा हूँ, निकल रहा है। ओके मेरा मेरे को भी फार्म करना है थोड़ा सा। 55, 56, 54 पे देखो। ओके तुम भाई निंजा, तुमने ऑफलाइन चलेंगे क्या तुम? नहीं अभी लोड में मेरा भाई। अच्छा मैं वही सोचूं मैं एग्जिट क्यों नहीं होगा ये।
और बेस्ट एनिमे स्टोरी लाइन के हिसाब से नारुतो। भाई देखो मेरा ना फर्स्ट एनिमे नारुतो है जिसको मैंने एनिमे समझ के देखा है, तो भाई मेरे लिए तो नारुतो प्रायोरिटी रहेगी भाई। मेरे लिए सबसे फेवरेट एनिमे नारुतो है। तुम बेस्ट एनिमे किसी को भी कह सकते हो। मैं ऐसे पूछोगे ना कि मेरे हिसाब से बेस्ट एनिमे कौन सा है, तो भाई मैं वन पीस, ड्रैगन बॉल जी, अटैक ऑन टाइटन, डेथ नोट, इनमें से किसी का भी नाम नहीं सकता हूँ। ये मेरे लिए सारे बेस्ट हैं। पर अगर मैं फेवरेट पूछोगे तो वो नारुतो है, चाहे वो कितना भी लोगों को बेकार नहीं है, बट नारुतो फेवरेट है भाई। फेवरेट की पॉइंट की बात करूँ वो सबका फेवरेट है भाई। अब लोडिंग सिस्टम में टफ है भाई। यहाँ पे आ गया। अरे यार ये भी क्वेस्ट भी बचा है मेरा यार, शिट। पर मैं ये करूँगा तो मैं अभी भी को मोड में हूँ भाई। अरे मेरा लोडिंग स्ट्रीम में आज तक वो हो रहा है। अब हुआ क्वेश्चन। डिक्लाइन हो गया। ड्रैगन बॉन्जी तो गॉटेड है भाई। ड्रैगन बॉन्जी तो भाई तुम समझ सकते हो भाई, बचपन से देखते आ रहे हो उसको। मैं वो जेट आ नहीं देखा हूँ बस, वो तो देखा हूँ। नहीं मैंने ड्रैगन बॉन्ग देखा है, ड्रैगन बॉन्जी भी देखा है। मतलब गोकू के बचपन वाला एनिमे भी देखा है मैंने। जी नहीं देखा मैं बस अनसेंसर्ड, वो भी। ओपीएम मोटिवेशन एनिमे है। अरे ओपीएम से याद आया निंजा भाई, इसमें ये जो अभी क्वेस्ट कर रहे हैं ना, मेरा बहुत अच्छा क्वेस्ट है भाई। ये इन्होंने इस ग्राफिक बहुत तगड़ी बनाई है भाई, उसमें जो कट सीन्स आते हैं। इसको ये इस क्वेस्ट की बात नहीं कर रहे तो मैं स्किप करूंगा पूरा। जो वो मतलब मेन स्टोरी क्वेस्ट है इसका, मतलब जो स्टोरी लाइन चल रही है। थर्ड वाला स्किप नहीं करिए, थर्ड कट सीन है पूरा। ये तो वो थोड़ा है, ये तो वो है जैसे कि कोई क्वेस्ट है। ये मेरे को पता है ये क्वेस्ट है, वो और जो स्टोरी लाइन तीसरा पार्ट। तुम यकीन करोगे ये मैंने ना आज किया है अपने मेन वंड में। आज प्रीमोस ग्राइंड किए, इससे मैंने तीन विश किए। मुझे पता ही नहीं था कि इससे तुम मुझंगा से भी ये वो देगा मोगा। आज मैंने इसे कंप्लीट किया। ओ बताओ भाई क्या चलना है। ओ बताओ एनिमे गेमर भाई, निंजा भाई की किससे शादी करवाए बताओ। आज तुम उस दिन शादी करवाए थे निंजा भाई की, आज किससे करवाए। सिंचो आ गया मेरे वंड में, नाइस। नाउ आई कैन बिंग सिंचो ऑन टंग। अच्छा मेरे को भी करना है। सॉरी भाई कर रहा हूँ। ये है ना भाई प्रीमोस की नहीं, पर मैं प्रीमोस का करूँ क्या। विश तो करना नहीं, इसमें मैं कभी विश नहीं करने वाला। मैंने सोच लिया है, नो विश अकाउंट दैट मीन्स नो विश अकाउंट, टोटली नो। वो आपका ऊपर भाई। यार तुम आए थे यार, हम गेंगाइन करने थे, मैं भूल गया यार। शिट तुम बाद में आना भी है। वाह वाह वाह। अब मेरे को करने दे अपने बारे में थोड़ा सा। नहीं अब वैसे भी मैं वो करूँगा, करेंगे तब करेंगे। भाई डिबेट करने से कोई फायदा नहीं, चुपचाप मेरे को नाइट नोवेल में से साइतामा मांगा सर्च करूँगा। मैंने साइतामा तो देखा है मैंने, मेरू नहीं पढ़ा मैंने। तुम समझना मतलब बेशक आगे भी भेजना भाई। वो मेरू नोवेल ओके, नाइट नोवेल ओके। देखो ब्रो सबकी खुद की प्रायोरिटी होती है। आई होप मेरू नोवेल अच्छी होगी। कहाँ से रीड करना ये नहीं बताया यार तुमने। मैंने ना नोवेल पढ़ी नहीं है। मांगास में जिस ऐप से पढ़ता हूँ उसमें सारी होती नहीं है, तो मुझे सजेस्ट कर दो। मेरे को भी चाहिए कुछ है क्या। हाँ तो बता दे। मैं अभी मेरे भाई सब स्ट्रॉन्ग है भाई, सबके स्पेशल एनिमे देखने में सब ठीक है भाई। एनिमे एंजॉय करो, ये डिबेट का कोई फायदा नहीं है भाई। तुम बड़े एनिमे, मैं सीरियसली तो एनिमे के जो वो होते हैं ना, एनिमे वॉचर्स की सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत ये है कि वो डिबेट करने जाते हैं हर बात में, कंपैरिजन वाली, कि भाई मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सब नहीं करना चाहिए भाई सीरियसली। अब मेरा फेवरेट कैरेक्टर नारुतो है तो मैं ये तो ना कहूँगा कि भाई हाँ नारुतो सबसे स्ट्रॉन्ग है। आई मीन बचपन में मेरा फेवरेट गोकू है, और जब मैंने फर्स्ट टाइम एनिमे की तरह देखा, मैं गोकू को कार्टून समझता था, तो जब मैंने एनिमे सोच के देखा कहाँ जाना है, तो मैंने फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि नारुतो को मैंने एज ए एनिमे देखा था। उससे पहले तो मेरे नज़रों में सारी की सारी चीज़ें वो थी कार्टून। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं ये कहूँगा कि नारुतो स्ट्रॉन्ग है दैट मीन्स वो गोकू वीक है। नहीं भाई सब अपने वक्त में स्ट्रॉन्ग है भाई। कंपैरिजन मत को एंजॉय करो।
पता है कोई छोड़ गया पीछे, चल कोई बात नहीं। कंपैरिजन भाई, बाकी वो कंपेयर नहीं करते। अभी तुम किसी ऐसे ऐसे किसी जॉनरा में घुसोगे ना जिस जो तुम्हें सबसे घटिया लगता है, वो बंदे कंपेयर नहीं करते शिट भाई। हम कंपेयर करते हैं एनिमे वाले कि हाँ भाई हमारा एनिमे फेवरेट एनिमे ज़्यादा वो है, ये सब नहीं है। एनिमे मतलब कुछ क्या होता है, एक्शन होता है, रोमांस होता है और उसमें एनिमे का अब जैसे कि मुझे वो एओटी बहुत पसंद है, सीरियसली वो एओटी बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। एओटी तो सबको पता है, अटैक ऑन टाइटन। इसका मतलब मैं ये तो ना कहूँगा कि भाई एओटी से बढ़ के कोई एनिमे नहीं है। हाँ वो है कि मास्टरपीस नाम से फेमस है एओटी का कहानी जो चालू किए ना वो सबसे बेस्ट है। पता है एओटी की एंडिंग स्टार्टिंग में सबको पता थी, मतलब नहीं उनको मतलब उन्होंने सोच रखा था उसके राइटर्स ने, बस एओटी की सबसे बेस्ट रेटिंग है हमेशा से, अवार्ड भी ज़्यादा है, नारुतो से ज़्यादा अवार्ड है एओटी पे, पर मेरा फेवरेट नारुतो है। तो मैं ये तो ना कहूँगा एओटी बेकार है, एओटी मेरा भाई मिकासा तुम्हें पता है भाई, मिकासा एक टाइम हिनाटा से ज़्यादा फेवरेट है मेरी मिकासा, और मिकासा से ज़्यादा फेवरेट मेरी 02 है। तो प्रायोरिटीज होती है 02 भी। अच्छा हाँ अच्छा देखा है ओके तो मैं सोचा नहीं। हाँ ठीक। अरे भाई मैंने देखा है भाई, मैं तुम्हें लिस्ट दिया तो था नहीं भाई, भूल गए क्या तुम? अरे मैं देखा हाँ वहाँ पे था, हाँ नाम था वो भी डार्क ऐसे फ्रैंक ऑफ डाइनिंग इन द फ्रेंड्स। हाँ मैं भी देखा हूँ, अच्छा है, मेरे को भी अच्छा लगा। और उस लिस्ट में आधा से ज़्यादा मैं भी देखता हूँ उसमें लिस्ट में। अरे वो लिस्ट में पता मैं सारे एनिमेस काउंट नहीं किए, वो मेरे वो है जिनके नाम मुझे याद है, जितने याद नहीं है उनकी तो बात ही छोड़ दो। वो तो मेरे को भी याद नहीं है, मैं भी बहुत है मेरे पास। अरे एनिमे बढ़ते जाता है, कभी घटता नहीं जाता है भाई। पता है एनिमे मेरे को एक चीज़ बहुत गंदी दिखती है एनिमे से, पता है जैसे कि मैंने आज कोई हैप्पी एनिमे देखा तो पूरा दिन हैप्पी होऊंगा मैं, सैड एनिमे देखा जिसमें कोई सैड एंडिंग है तो भाई बहुत अजीब लगता है भाई, फिर पूरा दिन क्या है भाई यार किस चीज पे बहस कर रहे भाई ये बंदे ना उस पे बात कर रहे हैं कि साइतामा वर्सेस गोकू, ये सब जैसे बात नहीं करते वैसे वो मेगू वर्सेस साइतामा पे बात कर रही है सब भाई सीरियसली। और थोड़ा सा बचा 52 की है, 52 में 52 क्या नहीं है भाई नाइक को यार तुमने नहीं किया भाई ये बताओ। अरे 51 का पीटे है भाई। निंजा भाई तुम्हारी शादी किससे करवानी है ये बताओ, तुमने अभी तक बताया नहीं। अभी तो मैं अभी कुछ नहीं सोचा वो सब। कब करोगे शादी भाई? अभी उतने भी रेंज नहीं हुआ शादी करने भाई 60-65 साल उम्र होगी, अब कब करोगे शादी भाई? इतने में नहीं होगी शादी तो कब होगी? 60-65 कितना उम्र है भाई? अभी मेरे पास 23 है भाई। 20 अच्छा 23 है बस। मैं सोच 60-65 हो गया यार निंजा भाई। ओह माय गॉड नहीं भाई हम भी आपका एज में ही है। यार ये टैग फोटो और नहीं है ना इस वक्त की। एक्चुअली मैं ये वक्त ना सिर्फ स्ट्रीम के टाइम पे खेलता हूँ, इसलिए ना मेरे को ये बहुत दिक्कत देता है कभी कभी वक्त, और फिर स्ट्रीम खेलने का मन नहीं करता, प्रोग्रेस हो जाएगी लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा कि कहाँ से हुई प्रोग्रेस, और ऑन स्ट्रीम में थोड़ा सा वो हो जाता है। जो भाई तुमसे हार एक्सेप्ट नहीं होती भाई, तुम दोनों बहस मत करो, छोड़ो, चेंज द टॉपिक भाई। अरे आप नहीं पढ़िए उसको, आप अपना फोकस करिए। मैं तो फोकस कर रहा हूं भाई। मेरा पीसी आ रहा है क्या वो मेरे को भी उसे मिल गया मल्टीप्लेयर में भाई, उसमें पीसी वाले बंदे भाई। अरे वो थोड़ा सा चाहिए मेरे को, ये पूरा कंप्लीट नहीं किया था। मैं बस डीवीडी ऑन करते रखा हुआ था, मैं सोचा ये टर्निप देखा है। अरे मैं डीवीडी आने वाला था पता है, फिर मेरे को याद आया, देखो तुम्हें मैंने बोला ना डीवीडी आना है, फिर उसके बाद मुझे पता चला कि ये जो अभी मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा तुम्हें दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन मुझे दिखा बुझेंगा मोगा वांगा है, मैं आखिरी में कहूँगा। जब मैंने देखा भाई मैंने कहा इसमें तो बहुत मेरे को पता था हम पूरा देखेंगे नहीं। तुम्हें पता है मैं पढ़ता हूँ नहीं, डायरेक्ट मिशन स्टार्ट खत्म। जो भी इमेज आता है तो मोरा प्लस दोनों देता ना, क्या खुद करते जाते। तो मैंने कहा यार ये खत्म ही करना।
क्यों मैं क्यों अब भाई? कल 200 डिबली कहीं 200 ठीक है भाई जाओ। वो गूगल तो ये भी बोलूंगा कि हिनाता मदागा को हरा सकती है भाई। हिनाता हरा सकती है भाई मदागा को, कैसे बात करो भाई। ठोक दे भाई ठोक दे, कम और गई ठोक दे। भाई सीरियसली बोलूँ ना, गूगल की बातों पे यकीन मत करो भाई। इंजॉय करो, जो तुम्हें टू लगता है वो उस पर फोकस करो। और ही नहीं आते। हर जगह गूगल नहीं सही होता है। आई गॉट क्राउन, मेरा फर्स्ट क्राउन इस बंद का। यही है ना? हाँ यही है। Tea is ready. Now it's time for a short rest. एक मिनट, ये फायर वहाँ क्या है, मैंने देखा नहीं। फिर सर्च कर भाई, मैं चैट नहीं पड़ा भाई, थोड़ी देर के अंदर इग्नोर करो चैट को। मैं ये करूँगा पहले, इसमें टाइम वहाँ है खत्म हो जाएगा, मेरे को सोच करना पड़ेगा। Spacing out. हमें 2000 प्लस पॉइंट चाहिए और मैं 4000 पॉइंट करो बस। मैं सिर्फ 2000 पॉइंट चाहिए गिनती के। एक दिन में चैट में अच्छा वही तो कर बोलो। Surprise! Rainy day. These are perfect for spacing out.
ऐसा क्यों भाई? I've never had dim sum at Shinue Kiosk before. एनोस वर्सेस साइतामा, वो देखो Ooh, and that's my अभी के टाइम पे next नारुतो episode. 19वें नंबर पे सबसे फेमस है भाई। Time to go नारुतो का टाइम था भाई, देखो सबका एक टाइम होता है। उस एक टाइम के बाद सारे एनिमेस का वो आता है, वो सब चीज़ों पे अपना होता है, सिर्फ एनिमे ही नहीं, हर चीज़ में हर चीज़ एक टाइम पे बहुत फेमस होती है, चाहे वो एनिमे हो चाहे गेम ही क्यों ना हो। उसके बाद उस एनिमे की और गेम की ना हाइप कम होती है। बस ये है कि वो कैचअप करके रखे, वो मेन चीज़ होती है कि वो कितना You're here early. अपने आप को I just ordered. स्ट्रॉन्ग The food करके should be out in a उसको second. एक Sit down. Sit down. स्टेज पे रख पाता है। Let's all take a seat. जैसे कि एनिमे वॉचर जो डॉटो में Here, नारुतो hand me your हमेशा cuffs. मोस्ट फेमस में सेकंड पोजीशन पे रहता है, और फेवरेट में वन पीस सबसे ऊपर रहता है, और मोस्ट फेमस में भी वन पीस अभी सबसे ऊपर Wait, रहता है। पर ये सोचो you ना, weren't supposed to नारुतो drink that, 2018 के बाद से न्यू That was एपिसोड for you to में rinse your utensils. तो इस तरीके से कंपेयर करना बेकार है। That's a thing. शॉर्ट की बात आ गया तो नारुतो हार जाएगा भाई। भाई मैं सीरियसली बताऊँ, शॉर्ट्स में ना बंदे डम है भाई, शॉर्ट्स में तो कुछ भी बना देते हैं वो। वन पीस 20वें नंबर पे है। गूगल की बात करो ना तुम, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जिन वेबसाइट से एनिमे देखता हूँ मैं उनकी बताऊँ, जैसे Zoro.2, एनिमे वॉचर, एनिमे प्रेक्स जो कि अब बंद हो चुका है। एनिमे प्रेक्स बंद हुआ ना, उसकी बात करो, उनकी रेटिंग बताओ, उनमें क्या रेटिंग चलनी थी। नहीं भाई देखो, किसी को तुम वो ऐसे नहीं कर सकते। अगर एनिमे गेम को ऐसे मत करो तुम, सबकी अपनी प्रायोरिटी होती है, कोई ना कोई एनिमे, कोई ना कोई कैरेक्टर जो उनका फेवरेट होता है। मेरा देखो, मेरे हिसाब से तो सबसे स्ट्रॉन्ग नारुतो होना चाहिए, मेरा फेवरेट है, बट वो है नहीं, मुझे पता है, मैं एग्री कर सकता हूँ ये, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारे एनिमे देखे हैं जिनमें नारुतो से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, कुछ अंडररेटेड एनिमे भी देखे हैं। तो जैसा क्या 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 निंजा भाई, जैसे क्या अंडा रहते अंडररेटेड एनिमे जैसे तुम में से किसी ने केस स्टडी ऑफ वेनिटस देखा है? तुम में से किसी ने पेंसनवेनिया नाम का कोई एनिमे है वो देखा है, जो कि नेटफ्लिक्स पे है? मतलब उसको मैंने टेलीग्राम पे देखा था, क्योंकि वो Zoro.2 पे था नहीं उस टाइम। और अंडररेटेड एनिमे और भी बहुत सारे हैं। माई मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड एक्स, ये भी नाम से एक एनिमे है, वो भी बहुत अंडररेटेड है, बहुत यक एनिमे है, बट बहुत इंटरटेनिंग है। तुम्हें 3 एपिसोड देखने तो चौथा एपिसोड तुम्हें बहुत इंटरटेनिंग लगेगा। वो कमेंट पढ़ने को शॉर्ट्स के वीडियो में तुम्हें फैक्ट पड़ वो आवाज़ वो एक सेकंड में कंटिन्यू करूँ, मैं ये रुक गया गेम। Wow, देखो, so much delicious ऐसा food. जजिंग वाली चीजें मत You कीजिए भाई। really eat डाइविंग all सॉन्ग, this हाय just डाइविंग for सॉन्ग भाई, कैसे हो भाई? हाउ आर यू ब्रो? That's just how we do it where I'm from. Most of the time, though, I don't eat lunch after dim sum. Oh, that's good to hear. Paimon doesn't need to worry तुम about किसी को holding जज नहीं कर back सकते then. भाई, किसी की हर किसी की पर्सनल Eat, चॉइस eat. होती If है it's not enough, we can always order more. Oh, ना and तुम there's उसके Tong Soy point coming as well. I don't usually have that in देखो, the सबका morning, एक but well, since पर्सनल everyone's चॉइस, here, सबका I just had एक to order it. कंफर्ट जोन होता है। What उस about you, कंफर्ट traveler? जोन में तुम किसी Is the के food to your liking? कैरेक्टर के बारे Want में some या more किसी के seafood बारे में मत congee? कहो, वो Let me तुम्हारे refill बारे your में bowl. नहीं करेगा। तो एक इसलिए ना
तुम ये कह सकते हो कि मेरा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, पर तुम्हारे ये नहीं कह सकते कि मेरा कैरेक्टर तेरे कैरेक्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये गलत है। तुम ये कह सकते हो हाँ भाई गोकू स्ट्रॉन्ग है, वो कहेगा साइतामा स्ट्रॉन्ग है, दैट्स इट, बात खत्म। तुम ये कहोगे कि सिर्फ गोकू ही स्ट्रॉन्ग है, साइतामा उसके सामने वीक है, तो फिर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार टेंसो एनिमे जरूर देखना। एक सेकंड, कौन सा है, स्क्रीनशॉट में दो। डन। वन मोर एनिमे बकेट लिस्ट में ऐड होते हुए मुझे हंटर एक्स हंट, भाई मैं ब्लीच नहीं देख पाया, सच बताऊं भाई। मैं उसके ब्लीच के पता किस एपिसोड पे हूँ, मैं उसमें हूँ 300 समथिंग एपिसोड पे हूँ, और मैंने फिंगर स्किप नहीं किया क्योंकि मेरे को आदत नहीं है, मेरे को बहुत गंदा लगता है जब मैं कोई एपिसोड स्किप करता हूँ, बिना स्किप किए देखा मैंने, और भाई मैं पक गया हूँ, मैं बहुत गंदा पका हूँ मैं। जब तक फाइट सीन्स होते तब तक सही चलता है, जैसे ही फाइट सीन खत्म होते ना स्टोरी ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने ना जबरदस्ती खवा दिया राइटर से। मैं इचिगो की फाइट जो हुई थी ना उसके रोगिया या क्या नाम होता उसके ब्रदर के साथ, जब वो फर्स्ट टाइम बंका यूज करते हैं, वो सीन तक मैंने देखा, वो मस्त था। उसके बाद की स्टोरी भाई इतना घिस घिस के चल रही है। मैं अभी पता है कहाँ पे हूँ, जब वो इचिको की जो वो गर्लफ्रेंड होती है उसका नाम क्या है, उसको किडनैप करके नहीं चला जाता है। अच्छा मैं वहाँ से आगे देख लिया, मैं वहाँ से फाइट भी देख चुका हूँ। सेम है वो, नाइस देखो भाई ब्लीच देखने कोई टिप दो यार, मैं बिना स्किप किए देख रहा हूँ, मैं ना पक जाता हूँ। मैं उसके अगर 2 एपिसोड एक दिन देखेंगे ना तो मैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक नहीं देखना होगा उसको, और मैं खत्म करने जाता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत वो होता है कि मैं कोई एनिमे स्टार्ट किया उसको मैं खत्म किए बगैर छोड़ दूँ। You invited us to this awesome restaurant and ordered a whole नो डाउट table नारुतो full की of स्टोरी और म्यूजिक expensive को dim sum बीट नहीं कर सकता just भाई। for ये the तो भाई three of us. नारुतो की स्टोरी Well, होता है, तुम ना you must be hiding the कर fact सकते that हो you're अपना some young master तुम्हें from a रियलिटी rich दिखती है। family. मतलब That would explain why you try to नारुतो keep के your सारे friends and एनिमे family की away from each बात खास other. होती है कि तुम्हें रियलिटी पता चलती है। आई मीन अगर तुम मूवी Are you की बात करो confusing ना me तो with मोस्टली Shinjo? हमारे फेवरेट कैरेक्टर बच जाते हैं, Huh? बट नारुतो You know में Shinjo? वन पीस You sure में know a और lot of people. बाकी सब एनिमे में अगर तुम्हारा कोई फेवरेट कैरेक्टर है Well, और when अगर you're वो on the साइड road as much कैरेक्टर as है I तो उसके am, मरने you की hear all डेट sorts of rumors. तय हो Sometimes they're चुकी है, true, कभी ना sometimes कभी they're तो मरने not. वाला है। What it comes down to I is mean, being able to tell the इताची जिराया difference. की डेथ भाई सीरीज More में often than not, that means knocking on some doors to find out for नजी yourself. सीरीज में बताओ नजी की डेथ भाई सैड है सारी चीज। Oh, you Ace की truly death। are a man of many वो talents, young कैसे कोई master ऐसा हो Gaming. सकता है यार। Okay, enough with the teasing. Sorry to burst your bubble, Paimon, but you're wrong ओ about भाई my अंकल family इंस्टिंक्ट का situation. साउंड अच्छा था भाई। मैंने वो एपिसोड पता बहुत Oh, मुश्किल से I देखा है bet she was क्योंकि उस onto टाइम something there. हम ऐसी My dad is just ऐसे an ordinary तुम क्या tea कह सकते हो कि merchant. मैं ना टच फोन था Small बट scale उसके stuff, नीचे जो you know? फोन It उठाने wouldn't का और even make काटने का sense जो to बटन mention होता his है ना, business कट in the करने same का, breath as the रिजेक्ट thing करने का in Commerce फोन, Guild. वो दोनों My बटन dad- थे वो बाकी पूरी स्क्रीन टच थी। He always उसका wanted होम me to बटन भी inherit टच the था। family business. To be a सैमसंग का था, मुझे merchant नाम like याद him. नहीं है। नहीं होम But that's स्क्रीन भी just बटन not था who I इनमें। am. नीचे के That's तीनों not who I ever बटन wanted to be. वो 3G फोन भी नहीं था, शायद 2G था कि कौन सा था। मैं उन्हें फेसबुक पे देखा था वो एपिसोड भाई, क्योंकि बाकी जगह तो क्रैश हुआ था वो। Have you ever talked to him about it? You बहुत know, तगड़ा about your एपिसोड है interests and aspirations and stuff. अंकल इंस्टिंक्ट भाई। मैं तो वेजिटा का वेट करूँ, जब वेजिटा का एपिसोड course I आएगा ना have. तब क्या होगा। I told him I wanted to be a wushu इंटरनेट dancer. ब्रेक का जो अभी But I wanted चलता है ना all कि of इंटरनेट Teyvat ब्रेक to see होगा, what I ये could होगा do. भाई गोकू के टाइम पे According to हुआ my इंटरनेट dad, ब्रेक, वो though, देखो। अब that वेजिटा wasn't a का real देखना तुम job. इंटरनेट कैसे ब्रेक होते हैं Just a भाई। child's जिराए pipe की dream. डेथ सैड तो है भाई देखो। Oh, that's आई मीन terrible. पता है मैं सीरियसली बोलूंगा, I'm sure तुम he इससे thought I would रिलेट come कर around पाओगे कि eventually, नहीं, but मैं नहीं जानता। Wushu dancing has always बट been the only thing I जिराया wanted की to do. मरने के टाइम मुझे उतना सैड महसूस नहीं हुआ था। मतलब मुझे सैड day, लगा था बट उतना नहीं He लगा tried था। to get जब me to मुझे visit some other tea merchants to उससे start ज्यादा सैड मुझे building the महसूस right हुआ जब relationships, नारुतो but आइसक्रीम लेके बैठा हुआ है, I पॉप्सिकल, refused to जिनको go. तुम दो में चेंज कर सकते We हो। got मतलब into a एक huge आइसक्रीम होती है fight. जिसके तुम दो We were डंडी this होती है, close to throwing तोड़ोगे तो hands. 2 आइसक्रीम बन जाती In है। the end, I was so angry that I वो पॉप्सिकल ran away वाला from सीन home. था जो मेरे को सबसे ज्यादा सैड लगा है, haven't been back क्योंकि since. जिराया की Now, डेथ मुझे don't get on my सैड case लगा है। just बट yet, जब okay? नारुतो बैठा है It's वो not like I है think I'm और completely without एरुका fault. सेंसे आके उसके आइसक्रीम No. तोड़ते हैं, वो और I वो know that जिराया it की जो wasn't the right मेमोरीज way to go वापस about आती है। things. But my dad's भाई stubborn. नॉट No गोना matter भाई, how बहुत hard I सैड tried to सीन है वो। convince him, it just went I in mean, one बहुत ear and ज्यादा out the सैड है other. वो। There was no changing his mind. I knew talking would only get me so far. If I made it big in Liyue Harbor, the results could speak for वो है themselves. sadness।
आई मीन नेजिक नहीं, मुझे बुरा पता है कब महसूस हुआ, But नेजिक के मरने के टाइम पे उतना I'm बुरा sure you महसूस both already know हुआ how that's मुझे going. तब महसूस हुआ Wushu नेजिक की डेथ dancing's जब वो just not that big in Leo रॉक ने उसको Harbor. उठ पकड़ता है, वो रोता है, I would go door to door from store to store, चीखता है भाई, वो asking if they would be रिएक्शन था। interested in hiring a performer. Most times, I एस के wound टाइम up पे eating मुझे nothing but तब humble ज्यादा pie. सैड महसूस हुआ, एस की डेथ के टाइम में जो सैड And महसूस you हुआ can't just obviously, rely on dreams to पर put food on the table, right? मुझे जो So, मेमोरीज हुई ना, जो कुछ चीजें ना found a तुम्हें job as a मेमोराइज guard जब to होते make हैं ना some तब ज्यादा सैड महसूस होता है। And now I जैसे have कि enough to get जब by and साबो then आता some. है, एस का Still, फ्लेम फूड खा लेता है, और साबो change आता है takes जब वो time. मरीन से बचाने के लिए Gotta take it फायर slow, वॉन्ग you know? बनाता है, और उसमें Paimon से understands. स्ट्रो हेड की बोट जा रही होती है सनी, Okay, और enough of all that serious जब talk. साबो अपने Her tea's बोट पे getting वापस cold. जाता है तो साबो और Ooh, एस एक साथ let's do खड़े something होते fun हैं, this afternoon. मतलब एस आग What do का you say, बना हुआ huh? होता है, और थोड़ी I'll देर बाद organize. गायब हो जाता है, वहाँ पे साबो दिखता है। Actually, वो we सीन बहुत kinda सैड है। already have plans this afternoon. जिन्होंने वन पीस देखा होगा उनको We पता होगा told मैं किस सीन की Xianyun बात that we कर रहा would go to her kite making हूँ। सेम workshop. ऐसा ही है। तुमने ये देखे Oh? कौन सा एडमिट Are you interested in kite making? आई मीन Dad? ये एडमिट सैड Oh, कह no. सकते हो, It's just that I cute happen to है। know Auntie Shenyun. आई मीन सबसे गंदा तो उस मोटे बच्चे का करता है। निंजा भाई तुमने डार्किंग इन द फैक्ट्स देखा है एनिमे? निंजा भाई तुम्हारी That वॉइस नहीं आ रही। title certainly humanizes her a bit. वो क्या भाई Oh, उस I know बंदे that ने she's an बचपन से adeptess. I met her बचपन during a क्या delivery मतलब once. जब वो मैच्योर हुआ But थोड़ा hasn't जिद she के been नहीं in the किया city कि lately? उसकी शादी किसी और She's से even होती है। tried, with some limited मतलब success, जियो तो to change हीरो her दोनों terms मजा of आते हैं भाई, ये सैड self-address था or भाई। something like that. एंडिंग थोड़ी सी मुझे She came to सैड see me a few लगी। days ago to ask about luminescent dyes. पूरा एंड में Oh, फन wait है, a बट second. जब वो एंडिंग होती She है ना doesn't भाई, वो plan on sad putting those on बहुत a ज्यादा है। kite, does she? Is that not something you can do? It's one भाई thing to use sad it on है भाई, cloth, क्या कर but सकते हैं हम? applying it to paper is another matter एनिमे entirely. की मीनिंग यही है भाई, अगर couldn't एनिमे she में tell me तुम्हें what she wanted सैडनेस them नहीं है for? भाई तो एनिमे देखने का फायदा Yeah, क्या she हुआ? does seem to जब have तक तुम्हें trouble with इमोशन that फील ना हो sometimes. ना एनिमे में, तब तक तुम It would be such a shame कार्टून if देखो। everyone worked so hard on their kites only for them to भाई get मुझे ruined in पता the है end. एनिमे की बात कर रहे हो, Okay, आई मीन I'll go with you. डोरेमोन भी एनिमे If में Auntie काउंट होता Shenyun है। wants to use those dice on a kite, तुमने the डोरेमोन formula will देखा need to be होगा। changed. Great. The more the merrier. स्टीम टूप मूवी देखी है तुमने डोरेमोन की? हेंगो एनिमे गेमर, डोरेमोन की स्टीम टूप एनिमे तुमने देखा होगा, उसमें तुम्हें पता होगा कि वो कैसा सीन होता है। दोनों देखा हूँ। भाई एनिमे में डोरेमोन की स्टीम टूप एनिमे भाई, निंजा भाई जब वो होता है ना, क्या कहते हैं, क्या सीन था मेरे को सीन याद नहीं है। उसका पास्ट पूरा पास्ट पूजा जब वो उसको पास्ट में जाके चेंज करता है, और वो जब पिप्पो और रीरू ये दोनों गायब जब होती हैं, मतलब शिजुका के हाथ में रीरू गायब होती है और पिप्पो नोबिता के हाथ में गायब होता है, भाई वो सीन कितना सैड है। या फिर वो आई मीन वो उसमें दूसरा जो सीन है, दूसरा है नोबिता इन नोबितास डायनासोर ऐसा कुछ है। एक तो ना मैंने डोरेमोन की सारी मूवीज ना मैंने इंग्लिश में देखा हुआ है, तो मुझे उसके हिंदी नाम में और इंग्लिश नाम में कंफ्यूज हो गया, क्योंकि पहले मैंने इंग्लिश में देखा, फिर वो टीवी पे आ गई, फिर वो हिंदी में नाम हो गया, फिर मैं कंफ्यूज हो गया, दोनों में कंफ्यूज हुआ। तो नोबिता इन डायनासोर ऐसा कुछ नाम है उसका। उसमें जब वो अपने डायनासोर को वापस छोड़ के आता है, डायनासोर नहीं होता वो, क्या होता है, नैपरस को क्या कहते हैं, पेनेटिप ऐसा कुछ होता है उसका नाम, नैपरस जैसा कुछ होता है उसका नाम। मैं भी इंग्लिश में देखा जब। एनिमे का मजा ही हुआ है सैड है। पोकेमोन में जब वो ऐश मरता है और पिकाचू जब होता है भाई, थंडर शॉक देते हुए सारे उसको आसपास के पोकेमोन्स को, वो भी सैड सीन है। अरे पिकाचू बहुत क्लोज भाई, पोकेमोन क्लोज है उसका भाई। वो कहता पिकाचू सिवा जब होता है भाई, स्वीट है भाई। आई मीन देखो एनिमे का मीनिंग ही तभी है जब तुम्हें सारी फीलिंग्स उसमें महसूस होगी। जब तक तुम्हें एनिमे में सैडनेस ना महसूस हो तब तक तुम एनिमे नहीं देखते भाई। जब तक तुम्हें एनिमे में हैप्पीनेस ना महसूस हो। मायोचिकी नाम का एक एनिमे है, वो भी अच्छा है। आई मीन वो इतना डम एनिमे है बट बहुत फन एनिमे है भाई। Ganyu! Come on, wake up! Some friends have arrived. हेंगो डेमसू भाई, नो क्या भाई, मैंने सुना नहीं नो का मतलब। Hello. जो आप मुझे बोल रहे थे डोरेमोन वो नहीं है तो नो मींस नो, मैं समझ नहीं पाया। मेटा डोरेमोन का जो बोल रहे ना स्टेप बाय 2 का मूवी वो नहीं I देखा have वो some नो meat इसलिए oil. वो देखा। स्टैंड बाय Perhaps we मी should try that. एनिमे गेमर वही। और यूनिवर्स के बाद मंकी यूनिवर्स आता है, उसके बाद
आउटर यूनिवर्स आता है और उसके बाद बाउंडनेस आता है जो कि उमेरू नोट गोनंगाई है। अच्छा नाइट नोवंग है, नोट गोनंगाई पढ़ने जाता A है। guest at Wanmin restaurant recommended it to me. I've tried it. अनदर एनिमे भी अच्छा है। Stimulative और कौन में effects तो are much किया ही नहीं है। stronger Another than what anime can be देखा नहीं क्या achieved तुमने? from chewing on mint leaves alone. अनदर एनिमे अनदर Another? अनदर नाम है उसका। अच्छा मैं एनिमे देखा। बता अरे वो हॉरर है, वो तो मैं देखा हूँ। वो भी अच्छा वो है। जो लड़की वो साइकिक कैसे करती जो जो उसकी बोलती वो सिस्टर जो की डेथ होता मुझे है, बहुत सैड लगी थी। मैं देखा हुआ है। अनदर तो Apologies in मैं advance. देखते ही किया तो कहानी मस्त था सर, हॉरर भी मस्त। Wait, Shenhe? Not there! ये गानियों के हॉर्न्स को टच करिए सिन्हा। आई मीन मैं भी टच मैं करना अभी चाहता तक था उसमें बट नहीं साव कर आया पाया। अकाउंट में तो किया ही नहीं है इवेंट। वैसे ये सब छोड़ो, तुम कोई See? एनिमे It सजेस्ट worked. करो। आईचिंग एंड She's एनिमे गेमर awake. वो कोई एनिमे सजेस्ट करो जो Are तुम्हें you पसंद okay, हो। Ganyu? Do you need some water? Bucket Or list में maybe ऐड करने something के to लिए। eat? देखूंगा तो मैं वो नहीं I'm fine. जब तक मैं निंजा I वाला just एनिमे ना feel देखूं। कितने chilly सीजन all निंजा बहुत वाले सारे एनिमे मेरे पास, बहुत मेरे पास भी जो तुमने बकरी बताया पर उसके जाएगा। बाद मेरे पता है मैं Huh. तुम्हारी सजेशन Was it देखना that चाहता था कि तुमने जो effective? सजेस्ट किया वो एनिमे कैसा है, मुझे पसंद आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद मैं अपना दूसरा एनिमे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। Master always says a cool head leads to a calm अरे heart. एनिमे What's अच्छे your हो गए favorite आपको। anime? So, does this mean that he's मेरा what we फेवरेट need to एनिमे की help बात you, करो तो भाई Ganyu? नारुतो है वो, क्योंकि मैं नारुतो मेरा फर्स्ट एनिमे जिसको मैंने That's what एनिमे the समझ के expression देखा। means exactly. I feel a bit better now. Was I asleep? Must have been around the time I usually take my करंट midday फेवरेट nap. पूछोगे, देखो नारुतो Did में you ऑन not टाइम sleep फेवरेट है, last पर करंट night? फेवरेट पूछोगे तो वन That पीस does seem देखो to मैं। happen to you often. और जो कि मुझे Perhaps बेस्ट you लगता should है, come करंट work at फेवरेट में मैं Wanmin वन पीस restaurant with me. में करंट फेवरेट में मेरा We है get off at 10 on the dot AOT every अटैक ऑन night टाइटन without जो अभी fail. खत्म हुआ है। I could never. I mean, I'm sorry. यार ये I सीन seem to मुझे have ना missed सबसे your अजीब name. लगता है भाई, मेरे को मिकासा ने You, फिर से uh, देखने, दोबारा से देखने का मन हो रहा है। Me? My name is Gaming. I work as a guard for the secure transport agency. सेंटर मेरे पास बकेटिंग इसमें है, Calming. मैं सोचा कोई न्यू The है name जो मेरे पास ना sounds हो। familiar. I believe I've heard your name mentioned around the Ministry of Civil Affairs. सीजन 1 सीजन 2 वेट People tell me ये you're नहीं an देखा मैंने। extremely मतलब ये मेरी bucket list enthusiastic में भी नहीं worker, and you are very generous with your help. Well, you know डिस्कॉर्ड me. ज्वाइन करूंगा आई थिंक बोल Or, रहा तुम्हारे I पास guess you don't. My name is Ganyu. डिस्कॉर्ड में This सब is हम Shenhe, लोग भी है and नहीं this is रहा Yao Yao. बैठा हुआ। It's an honor to finally meet you all. Oh, you must be here for Auntie Xianyun's kite making workshop, right? Yes. I have neither made nor flown a kite before. As long as Master is willing to teach, I am willing to learn. Me too. I want to participate in the kite flying competition with my best friend. Plus, it's more meaningful if you make the kite yourself, right? Your best friend didn't come with you? Well, और डीमन she's डीमन been तो जब super वो busy फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ helping तभी से Dr. देखा भाई। Baiju lately. माय हीरो I'll meet up एकेडमिया with भी her अच्छा later है। and give her a बस पता है huge surprise. मैंने नोटिस किया है, Oh, I also brought bandages and आई ointment with me मीन today. बुरा लग भी जाए तो It's मैं easy क्या to कर cut सकता हूँ। yourself when कुछ working with एनिमे ऐसे होते हैं ना bamboo, जिनके so टॉक्सिक I फैन thought बहुत I ज्यादा should होते come हैं। prepared. Wow, जूजुत्सु you're really काइसन हो गया, thoughtful. माय हीरो As for एकेडमिया हो गया, myself, ये दो एनिमे I'm हैं afraid जो I lack और some of my जो बिजार companion's एडवेंचर। आई मीन enthusiasm. मैंने ये एनिमे नहीं देखा बट I इसके was फैंस बहुत originally टॉक्सिक हैं। planning ये to buy a तीन ready-made फैन kite and just एनिमे enjoy में the festive देखा है city जिनके atmosphere फैंस with बहुत everyone. टॉक्सिक हैं। आई मीन But Cloud Retainer is always going out of her way to look मिडोरिया after को her वो juniors, कंपेयर कर देते हैं wanting us नारुतो to से have the फाइट best करने there के लिए। is. क्यों She मिडोरिया always puts नारुतो को us बीट before कर देगा। herself. मेरा बस एक क्वेश्चन है कि मिडोरिया चाहे It नारुतो was वंग so में आए तो thoughtful of नारुतो her to मिडोरिया arrange वंग में this आए। workshop. अगर So I उसने simply couldn't 1000 let शैडो such कॉन जिसको consideration यूज go कर to दिया waste. या फिर 2000 शैडो My कॉन बनाए हैं तो motivation for मिडोरिया being क्या ही here करेगा। might be a little different, yes. वाइल्ड विप But से I'm भी ready कुछ to नहीं put कर in सकता भाई, just वो as much सारे के effort as सारे वो everyone कोरामा else. पावे के साथ होंगे। Well, we're all here. But where the heck is Xianyun? Shouldn't she be here by now? Who is it that speaks of oneself in such an ill-tempered tone? Oh, come on! You clearly heard Paimon! Master stopped to buy grilled tigerfish to share with everyone. Come get it while it's still warm. Oh, Paimon, sorry, Miss Illuminated Bird! Paimon always knew you were the smartest, coolest, and prettiest Adeptus. एनिमे वॉच Someone as बेस्ट wonderful as you is sure to have brought enough for And Paimon as season well, right? एनिमे का नाम है वो। एनिमे वॉच
एनिमे वॉच नहीं है, उसका आगे जो था बेस्ट द स्पेड ऑफ एंड, वो ओके एनिमे का स्क्रीनशॉट नाम नहीं है होगा वो। मेरे से, हो गया। ओ नहीं वो मैं है आपका, हो गया। अच्छा है, वैम्पायर जैसा है, बस ये बता दो, अच्छा हिंट कंटिन्यू बस, है। हिंट बस दिया आपको, वैम्पायर जैसा ही बस कहानी है। So delicious. Paimon's life is वैम्पायर complete. मस्त है मतलब। It appears that we've मैंने वो- ended up with quite a आई few थिंक वो मैं तुम्हारे participants इसका indeed. स्क्रीनशॉट नहीं है। Go ahead and divide yourselves into small groups. The materials are over here. The regular dyes and luminescent ones have been clearly marked. Use them as you see fit. As for how to make the kite, one assumes you all made sure to listen to the instructions one provided while we were eating. Yes? Are there any questions? Paimon may have focused a little too hard on the एक्चुअली मैं बताऊँ, Yes, मुझे I'm ना listening. मॉन्ग एनीमे ज्यादा अच्छे लगते हैं, सीरियसली बताओ। जैसे नारुतो, वन पीस हो गए ना, ये मुझे ज्यादा पसंद आते हैं। कम से कम वो कुछ हफ्ते चलते तो है। ये 24-36 एपिसोड के एनीमे तो 1-2 दिन में खत्म हो जाए। एक आज One देखा will मैंने wait under और this कल देखा, tree खत्म and हो गया। avail oneself of the cool air while one digests. Do not hesitate to seek one's company if you have any trouble, questions, or simply want to chat. We're not in any hurry to get started. Why don't we go see what the others are up to? Hey, Gaming! Want to team up? Huh? I have to participate? I thought I'd be done for the day after adjusting the dye formula. You're that unenthused by kite making, huh? That doesn't seem like you. No, it's not that. It's just... it would take too long to explain. I guess I'll just make one then. What shape should we go with? How about a butterfly? What do you think, Shiyu? Is there a particular design ज्यादा you want? एपिसोड नहीं है, 12 एपिसोड भाई एक दिन में खत्म। That might be a little hard to pull वो off. तो मेरा पता है मैंने तेरा अभी एक तो- रिसेंटली 2 एनिमे देखे हैं। They're super एक देखा मैंने cute. रिंग लाइफ Okay, सीजन 1 it's सीजन 2 decided then. दोनों देखे हैं मैंने, और एक देखा मैंने नाओगामी। आई मीन दोनों एनिमे बहुत अच्छे हैं। मुझे बस एक दिक्कत है दोनों एनिमे में, जो कि वो फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टोरी के अंदर है और कोई फिक्स नहीं कर सकता वो। फर्स्ट Shenhe, वो ये है कि it would be great if you could नाओगामी में refrain from putting things on my horns from now on. जो हमारा They're वो है, जो really गॉड quite है, sensitive. I see. My उसकी apologies. गर्लफ्रेंड I उसको shall भूल remember जाती है that in the और future. थोड़ी सी डम है वो। Thank you. कुछ No डम harm सीन होता है done. उसके अंदर, तो इसलिए मैं Good. वो चीज मुझे पसंद नहीं आया। सेकंड भाई उसके अंदर ना Could I रिंग touch लाइफ them में उसके just सारे once more फ्रेंड्स उसे though? भूल जाते हैं No बिकॉज oil or anything वो this अपने वर्ल्ड time. में वापस नहीं जाता है। I've आई मीन just केज always वापस आ wondered जाती है। what Miss Ganyu's horns feel like. Huh? Please, I told you. Just call me Ganyu. Well, all right. Just be gentle. Firm to the touch with no discernible temperature. Oh, not unlike certain medicinal plants I've eaten before. Oh, still, Ganyu appears to be shaking like a cat whose whiskers have just been touched. I should stop. I see. Then I'll apply the oil to your forehead next time. Oh, no need. I'll just refrain from taking afternoon naps outdoors. Anyway, we should probably get started on our kite. It won't be long before Cloud Retainer comes to check on अच्छा our वो जो progress. खुद मंदी बना देता है वही, Perhaps- उसमें जो उसे गर्लफ्रेंड को किस वाला Perhaps we सीन है ना, should वो just सबसे choose the गंदा most लगता है। आई मीन traditional style. मैं शॉक्ड था। Okay. मैं मन कर था ना इस गेम में घुस के उसको Oh, थप्पड़ they मारूं, seem to be getting गेम along के swimmingly. उस एनिमे में घुस Let's के not ना disturb them. उस कैरेक्टर को थप्पड़ मारूं। मतलब मैं उसकी फीमेल एमसी की बात करूं मैं, जो योटा की जो वो होती है, जो फोंगवा होती है, भाई मन कर रहा थप्पड़ मारूं। भाई कैसे तो योटा बेचारा Auntie Cloud Retainer, look! एक तरह से कह सकते हैं Am कि I doing एबिस it के अंदर right? फाइट कर रहे हो तुम, उसको Very बेटे good. कर रहे हो, तुम भूल जाओगे Your इसको। frame is अरे भूल nice जाओगे and तो समझा, कोई sturdy. अननोन पर्सन जिसे तुम फर्स्ट This टाइम नहीं हो तो design, किस कैसे कर सकते is it a finch? Yep.
One is looking forward to seeing your finished product. What color are you going to make it, Yao Yao? I haven't decided yet. If I make it blue, it'll be more like my friends. But if I make it gold, it'll be more like me. If you are asking for one's own opinion, one would advise choosing gold. When giving a gift, the key consideration is the recipient's feelings, is it not? One imagines your friend would much prefer a kite that reminds them of you. Oh, hey, I never told you the kite was for Chi-Chi. How did you know? With age comes wisdom, child. One simply has a way of knowing things. Oh, cool. Thanks, Auntie Cloud Retainer. I'm gonna start painting it gold right now. Good. One will watch. You two seem strangely unoccupied. One was under the impression that one was supposed to be doing the relaxing. Is your kite finished? Oh, we actually haven't started yet, but we're going to start, right now. We should get started on our kite now. Let's go. First, we have to decide on the shape. Hey, what are you laughing at? Oh, that's not a completely crazy idea. If nothing else, a Paimon-shaped kite could at least make sure you never get lost on your travels and always find the tastiest food and funnest things to do wherever you go. Maybe we're not exercising enough artistic license. Ooh, we should exaggerate this a bit. How about this? The word Paimon means the guardian angel of travelers. Now, what expression should we give her, since the kite is going to be flying super high in the sky? Ooh, like this? Ooh. The title of Champion Kite Flyer is mine! Now that we've decided, let's make it happen! It's done! Paimon has to say, Kai Paimon might even rival real Paimon in terms of cuteness. Now we just have to attach the string, right? All right, gather around, everyone. Oh, Shenyun's calling us! Let one take a look. Wow! Ganyu and Shenhe made a scissor-tailed swallow! It's so pretty. Yep. The coloring makes it look a lot like Master. If the tail wasn't split in two like that, it might even be a spitting image. If you look closely, there are a few spots where the colors go outside the lines. Did you doze off while painting it, Ganyu? I did the painting. I stared at the paper for quite some time, but I simply could not recall the coloring of any bird. Except Master. Or should I say that I'm too familiar with her crane form? Even when she stands before us in human form, all I can see is blue and white. Oh, well, now that you mention it, Paimon can see it too! Exactly. So I simply closed my eyes and painted from memory. No way! You can paint with your eyes closed? Wow, the disciples of Adepti really are something. You are most filial, Shenhe. One is flattered by the likeness. Hello, bro. How are you? The कैसे हो भाई? Swanee that Gameng and Shuyu made looks very majestic. I'm sure it'll look even more impressive as it soars through the sky. The eyes and ears glow in the dark, so you're sure to see it at night. Your golden finch is cute too, Yao Yao. It's all thanks to Auntie Cloud Retainer's guidance. What about your kite, Traveler?
मैंने ये वाला क्वेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, वो भी सुबह आज। एक्चुअली मेरा ये सेकंड अकाउंट है, Its मैं भी कर चुका हूँ। self-important countenance bears ये मेरा a नो विश striking अकाउंट है, इसमें मैं विश नहीं resemblance कर to that of its सकता, namesake. तो इस वजह से It मुझे ये makes her look कंप्लीट like करना she's पड़ा already संचो won के the लिए। competition. Well, that's gonna happen one way or another. Is that the Jade Chamber? Oh? Who dares attempt such a flagrant display of impropriety by releasing a kite into one's territory without one's permission? Oh, and to do so by making use of this crude piece of mortal machinery. One simply must know who it is that possesses such impertinence. Continue attaching the strings, everyone. One will be but a moment. Cloud Retainer? Traveler, Paimon, could I trouble you to go after Cloud Retainer? Master's going to be okay, right? I'm more worried about the person who released the kite. वो मैं कंफ्यूज हो गया कि मुझे गेमिंग या भाई मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम ना शांगनिन को बिल्ड करो और उसके बाद गेमिंग तो करना। शांगनिन बहुत सारी टीम्स में यूज होती है। और इस जो विश में से तुमने निकालना क्या है, तुम्हें सिंचो निकालना चाहिए था अगर तुम्हारे पास शांगनिन है तो। शांगनिन तो होगी, तुम्हें सिंचो निकालना है ना तुमने। बाबा ब्रो तुमने क्या निकाला, सिंचो या शांगनिन जो फ्री कैरेक्टर था? सिंचो है तुम्हारे पास तो शांगनिन के साथ सिंचो बहुत अच्छा काम करता है। It's right there! This Fontanian दोनों को अपग्रेड device of कर दूंगा तो mechanical चलेगा motion ना। is quite पहले curious शांगनिन को करो indeed. और फिर गामिंग को Now करो। is तो hardly an गामिंग opportune डीपीएस time है। for your musing. अगर तुम्हें डीपीएस की Someone कमी है among तो us was not गामिंग करेंगे sufficiently अभी के अभी। attentive, and now the शांगनिन kite को has थोड़ा रुक के vanished. करेंगे ना, अगर तुम्हारे पास Calm डीपीएस है yourself. कोई तो Do you शांगनिन को have any करो क्योंकि डीपीएस recollection के of साथ its शांगनिन last काम कर सकती location? है। अगर तुम्हारे पास गाइडन है तो शांगनिन करो। One believes it सिंचो drifted in करो। the direction of अगर Mount तुम्हारे पास Upsal. सिंचो है और गाइडन नहीं है तो गामिंग करो, गामिंग सिंचो। Perhaps it is mere happenstance, but one feels a certain sense of dread at the thought. Your concern is नहीं misplaced. तो आईडी दे Surely. दो, आईडी देखने से Cloud पता चल Retainer is जाएगा। either in the city looking after her disciples or बता secluded in दूंगा her भाई। abode हाँ वैसे attending वो अपनी to her यूआईडी तो हम research. यूआईडी में देख के बता She देंगे will कि not तुम्हारी बेस्ट notice टीम कौन that सी होगी kite. तुम्हारे कैरेक्टर के On हिसाब the से। subject of said kite, however, one simply must remark on the genius of its windless lift technology. One cannot help but surmise that its ingenuity rivals that of Cloud Retainer's creations. Still thy tongue. If Cloud Retainer were to hear you profess such a thing, we can both say farewell to any further use of the supreme cuisine machine. One presumes that this kite belongs to you. Huh? Regard the situation with which we are now confronted. This is all your fault. One's fault. One seems to recall that releasing the kite was no solitary endeavor. Say something, Mountain Shaper. Surely you can think of something to appease her. Further explanation shall only fan the flames of her wrath. It would be better to stay silent and retire at the earliest opportunity. We can hardly avoid her forever. That may suffice during Lantern Rite. But what about the Moon Chase Festival? Sooner or later, she will discover our true identity. Hello? Go retrieve the kite. Absolutely not. You retrieve it. That is not our kite. Oh, so an adeptus such as oneself is mistaken then? Ah, you're an Adeptus? Please forgive us for any impropriety. I truly possess no inkling of who could have released a kite into your esteemed domain. Pray, who could be responsible for such wanton behavior?
Verily, verily, we were but delighting in the surrounding scenery. This locale is home to such exquisite mint. Well, and if that's all, then we'll just be on our way. We finally caught up. You sure do fly fast in your illuminated bird form, Shinyan. Mooncarver? Mountain Shaper? What are you doing here? You! Okay, now Paimon's getting a weird vibe. Did she say something wrong? It is of no consequence. Long has one seen through their disguises. One was simply curious as to how long they would keep up the act. Then you are not angry? How could one feel anger at the sight of two old friends enjoying themselves? One is also well aware of how enticing these city novelties can be. We were simply consumed by a fit of festive spirit. Seldom do we get the opportunity to partake in the delights of the times. However, we are far from being as adept as you in matters that require a deftness of hand. No worthy kite could be born of our own making. Thus, we could only take the convenient route, so to speak. Your prowess in mechanics is unparalleled, Cloud Retainer. You wield the wind and waves themselves. Your singular talent stands unmatched across the land. Of this, we are well aware. One has guests to attend to. We will have to convene again some other time. Traveler, Paimon, do try to keep up. We're leaving already? All this flying from place to place is wearing Paimon out. They're back. Paimon's pooped. Hi. Why are there only two of you left? After you left, Yao Yao and Shu Yu tired themselves out playing with their kites. Gao Ming offered to escort them home. Before he left, he said something that I don't quite understand. Oh? What did he say? He said, a kite is always tied down no matter how far it flies or how high it soars. Its tether prevents it from ever truly flying free. He looked quite dejected as he said this. Now that you mention it, Gao Ming did seem to have a rather strange attitude towards kites. A reflection of himself. If I were a kite, I would cherish that tether as a symbol of kinship and the bonds that tie us and... Shenhe? It may be an exceedingly slim and distant connection, but lose it, and you lose that which links you to home. If Gao Ming truly sees a kite as a reflection of himself, then I fear I understand his words even less. Well, people often have different points of view depending on their mindset and experiences, right? It's actually quite normal. Just like some people can eat spicy food, but others won't go anywhere near it. Exactly. That's why tolerance and understanding are as important as they are. Tolerance and understanding? What brought about this conversation? Did one miss something? We were just chatting. You don't have to butt in on every little thing, you know. वो वैभव तुम्हें ना Where were you anyway? UID के बीच में स्पेस या फिर ABCD डालना पड़ेगा ताकि वो हाइड ना हो। Night fast approaches. YouTube हाइड कर देगा If you are उसको। otherwise unoccupied, one would entreat you to stay and eat before you depart. Ah,
It's been so long since I've had the chance to enjoy your cooking, Cloud Retainer. Worry not. One has prepared a variety of meat and vegetable dishes. One is more than familiar with everyone's culinary proclivities. Hey! Paimon's hungry too! It's not like the dim sum and grilled fish could keep her full the whole day, you know? Shenhe, Ganyu, come with me. Whoa, what's with all the secrecy? You're not trying to play favorites, are you? If you're ready to serve the food, we can help too. वैभव भाई तुमने शोकेस में कोई भी कैरेक्टर नहीं गाया है और यहाँ पे गाओ शोकेस में कैरेक्टर गाओगे उसके बाद ही मुझे दिख पाएगा एंड शिट मैं तुमको अभी देख अगर मैं हटाऊंगा तो मैं रिक्वेस्ट भेजो अभी 2 मिनट के लिए उससे एक्सेप्ट को कैरेक्टर गाओ क्योंकि वो कैरेक्टर गाने के अब 10 मिनट तक मैं देख नहीं पाऊंगा वो 10 मिनट बाद ही तुम्हें कैरेक्टर देखने का ऑप्शन आएगा ऐसे नहीं गाना होता है देखो यहाँ जाओगे एडिट प्रोफाइल पे यहाँ जाओगे ऐड पे और तुम कैरेक्टर से ऐड कर सकते हो ऐसे यू जैसे मैंने किया है कोई भी 8 कैरेक्टर्स तुम अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो तो उन कैरेक्टर को ऐड करो जिनको तुम यूज़ करते हो जिनकी तुम टीम बनाओगे आगे जाके तो वही ऐड करना ठीक है मुझे ये बात दिखाओ कि तुम्हारे पास कौन सा कैरेक्टर है और ये 10 मिनट तक नहीं हो पाएगा तो 10 मिनट तक वेट करना पड़ेगा तुम्हें अगर तुम्हें देखना है तो क्योंकि 10 मिनट के अंदर वो अपडेट होने में 10-12 मिनट का टाइम लगता है Is the headpiece secure? I should have asked Cloud Retainer to check before I stepped outside. मैं सीरियसली बताऊँ शिन्हे को देख के ना भाई शिन्हे को देख के मेरे मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है why? Oh, how should Paimon put it? You both look so elegant and refined. Those outfits really suit you both. मैं तुम्हारे बंद आ जाऊँ फिर देखते हैं वो अभी नेवी में क्वेस्ट करो उसके बाद आना One would expect nothing less. What colors have you been partial to lately, Shenhe and Ganyu? Lately? Why is Cloud Retainer suddenly asking about what colors we like? I like black. One is gratified to see one's disciple has inherited one's own tastes. The color black doesn't get dirty easily. A virtue I've come to value recently. And you, Ganyu? I favor blue and black. And the material is sufficiently comfortable, yes? Yes, very. I simply cannot thank you enough, Cloud Retainer. For this gift. And the kite, too. Thank you, Master. One is content, as long as you are pleased with the gift. One hopes these garments will see much use. Seems like your supreme cuisine machine is just getting better and better, Shin. This golden crab's particularly good. The shell's deliciously crunchy, and the meat inside is so succulent and sweet. Paimon can't stop eating. It's a good thing Ga Ming isn't here, or Paimon would have to duel him for the food. You know, with chopsticks. He traveled all this way on account of the kite-making workshop, and he spent the whole afternoon looking after Shuyu. One was hoping to treat him to a meal. Oh well,
one will just have to extend one's thanks in person. It's rare for someone to make such a good impression on you, Cloud Retainer. One has high standards. He appears to be a young man of much merit, and one is not the type who would see such potential squandered. It appears that he wishes to break free from the kite string that tethers him. Kite string? Huh, what strange metaphors you speak in, Shenhe. Ever since you returned from one mean restaurant, your turns of phrase render one at quite the loss. Where do we even begin? Oh, do you know about the conflict between Gaming and his dad, Xinyan? One has only heard that the two are not on good terms. He ran away from home and hasn't been back since. Oh? Ran away, you say? Huh. One believes we would all benefit from a more thorough retelling. Start from the beginning. Oh, okay. Paimon just hopes he won't mind. What? This shall not do. Lantern Rite fast approaches. We must make haste. As one was contacting various tailors around Liyue, one could not help but be reminded of Menogias. He possessed a singular talent for clothing design. He had an exquisite eye, not just for fabric selection and color pairing, but also for what accessories could best accentuate a garment's overall styling. At a gathering of Adepti, Bonanis once complained in secret to some of the ladies in attendance that the skirt Menogias made for her was too long and impractical, lamenting that it would only hinder her in battle. However, when one asked Menogias his opinion, he remarked that the train of the skirt would serve to enhance her adeptal countenance by exemplifying a certain elegance. Menogias was that type of person. When it came to topics relating to garments and accessories, not even Rex Lapis could best his stubbornness. And later... one seems to have strayed off topic. One means to say that Lantern Rite should be a day of reunion. It is a time to address problems before they turn into regrets. Fate is fickle. The cruel reality of this world is that suffering and misfortune can befall any of us without design or reason. If there is a chance for young people to remain insulated from this reality, one should do one's utmost to make it so. That's nice and all, but... Do you have any ideas, Cloud Retainer? Perhaps adeptal arts could be of use. No. Mechanics, perhaps. One fails to see its use in a situation such as this. Is there anything I can do to help? Combining our efforts is a fine idea indeed. Aha! One has an idea. How about this? Does that make sense to everyone? Yep. Oh, Paimon really hopes this works. One's designs never fail. Now then, I counsel rest for all, and to make the necessary preparations. One shall see you in 2 days. मैं यहीं पे हूँ। पढ़ने लायक कुछ है ही नहीं, अब क्या बोलूँगा। It's time to carry out the plan! Let's go find Gaming! Hope everything goes well.
What's the hurry? You've certainly gotten an early start this morning. Playing games already, are we? Who won this time? You the one buying dim sum again? Hey, when you put it like that, it makes it sound like I'm always the one losing. Ah, perfect, you're all here. There's an important commission I need your help with. Alright, I've got the time. Where are the goods? It's not just goods this time. वो फंगो 3 पहुंच गए क्या? I mean शांगन हाँ शांगन मुझे मिल चुकी है. मैं फंगो 4 भी इजीली क्रॉस कर सकता हूँ. Sure. What's this merchant's address? Here. If the client's that important, then this must be a very crucial, very pressing commission, right? Of course, the sooner you complete it, the better. I would advise you to depart as soon as possible. Alright, don't work too hard now, Longjo. We'll set off then. Come on, let's get moving. We're not frozen. You're a bit quiet today, Gaming. Oh, do you want Paimon to tell a story? We're almost there. I'll take a rain check on that. Piece of cake. Hello, you must be the tea merchant heading to Liyue Harbor. We're here to escort you. वो तुमने शांगिन को विश से लिया है? नहीं, मैंने वो शांगिन को उससे लिया है, एबिस से. एबिस में तुम जाओगे ना तो थर्ड फंगोई कंप्लीट करने पे शांगिन मिलती है, फोर्थ फंगोई कंप्लीट करने पे कोंगे मिलती है. ये दो कैरेक्टर तुमको एबिस ऑर्डर से मिलते हैं. ये नो विश अकाउंट है भाई, इसमें एक भी विश नहीं किया है. यहाँ तक कि उस पे भी नहीं किया है हमने, नोएंग बैनर पे भी. Just leave this delivery to him. Trust Paimon, he's got this in the bag. Gaming is everyone at the Secure Transport Agency says as much. Even the Ministry of Civil Affairs has nothing but good things to say about him. Seems like you've made some sort of name for yourself at least. The goods are all in order? Yes, they're all here. Then let's get going. A very important client has asked for you by name. You kinda have to come with us. Paimon doesn't know how we would explain ourselves if you just didn't show up. Plus, you'd be missing out on a huge money-making opportunity. I see. I suppose I will have to trouble you all to escort me, then. Let's go. Got it. Everything's ready. Let's go.
देखो ये मिलना है तुम्हें 4th फ्लोर पे, और 3rd फ्लोर पे तुम्हें वो मिलता है शांगनिन। मैं शांगनिन ले चुका हूँ, ये मैंने अभी तक नहीं है बिकॉज मैंने 4th फ्लोर ट्राई नहीं किया। अब यार मैंने ये इवेंट भी नहीं किया यार। Entering standby mode. I hope nobody disturbs me. For so long! Is anyone tired? How about we stop and rest for a bit? I'm fine. Gaming! Don't you usually have some delicious snacks on you? Come on, bring them out so we can share them! I'm fine. This place looks nice and open. Why don't you all rest here for a second? Huh? What about you? You're not going to join us? I'm not tired. I'll keep watch. Oh, but... Just let him go. Okay, we'll just share amongst ourselves then. Did you know, Uncle Ip, that the flavor of these cakes changes depending on... Halt! Who goes there? It appears that one's movements were overly conspicuous. Enough of your musings. Focus. Focus on the matter at hand. Present your exquisite ornaments at once. Indeed. Bring them forth readily and without protest. Ah! What do we do? It seems as if these two are acting alone. It won't be difficult to subdue them, but they might have something else waiting in store for Dad. The best way to keep him safe is... Leave this to me. I'll handle them. Traveler, Paimon, take my dad and the goods away from here. No, Gaming. It's too dangerous. This is what I do. A thorny foe indeed. Let us depart and seek a target softer in blows and disposition. Don't think I'm gonna let you off so easily. Away! Let us away! Coming! Don't worry, he's a great fighter. Paimon's even seen him take down a dozen or so treasure hoarders all by himself. But Coming, if he had just stayed by my side and learned the family trade, he wouldn't have to put himself in such dangerous situations. We just have to trust him. Let's go ahead. We'd best get away from here, in case there are other bandits in the area waiting in ambush. All is going to plan. Okay, we should be good to stop here. Xiangli? Oh no, what is he doing here? Good sir, please, listen to me. Reel in your line and leave this place as quickly as you can. There are bandits in the area. Bandits? Acting in broad daylight?
Oh. I see. It appears many people are catching a chill as of late. If your throat is bothering you, Paimon, perhaps some tea and rest are in order. Nope, no need. Paimon's fine. She just, had some cake stuck in her throat. If there are indeed bandits in the area, then we should inform the Millilith at once. Oh? Well, if that's the case. Such matters are best left to those with the necessary expertise, wouldn't you agree? I suppose you're right. If ordinary people like us got involved, we would only cause more trouble. Since we find ourselves otherwise unoccupied in this beautiful area, why don't we find a quiet place to relax while we wait for good news? That would be lovely. एक छोटा ये डाक पता ये में टेक्नोलॉजी कौन does have a reason to be worried. After all, Gaming, the guard we mentioned, is his son. Gaming. The name sounds somewhat familiar. Ah, yes. That is the name of the Usho dancer who has been performing around Liyue Harbor recently, is it not? Oh, have you seen him perform? Indeed. I cannot help but admire his skill. He truly encapsulates the spirit of the Suani. Usho dancing has become more well known in Liyue Harbor recently. However, although performers are seeing budding success, they have no doubt had to face many hurdles along the way. One's not so easily understood by spectators such as ourselves. If you ask me, what truly deserves admiration is perseverance in the face of adversity. That is a rare attribute indeed. I have heard many of my acquaintances praise Gaming for his kind, selfless, and courageous disposition. To have a child so accomplished and upright, you must be a very proud parent indeed, Uncle Ip. Seems like Zhongli has decided to skip the formalities. Well, he's a hard worker. Yes. You should be sure to tell him you think that when he gets back. Your son is young yet. It's normal for someone his age to be a bit hot-headed. It's understandable to find talking about such things in person difficult. If there's a particular sentiment you wish to convey, perhaps we could pass it along for you. No. It wouldn't be right to ask that of you. This thing between us has festered for many years now. In truth, there are some things that simply aren't easy for us to talk through. I've been in the tea business for most of my life, and I always hoped my child would do the same. Otherwise, how would he support himself? Over the past few years, I heard how well he was doing for himself as a guard. How his work was taking him to farther and farther off places. I also heard that he never gave up on wushu dancing. It made me happy. But I was also worried. When you're young, you can handle all that physically taxing work and manual labor. What young person isn't capable of making a living that way? My concern is what happens when you get old. Every time I get to thinking like that, I cannot help but be reinforced in the belief that I was right. That I was right not to give in. I often regret introducing him to wushu dancing as a kid. If I had known how things would turn out, I would have never taken him to see those performances in the first place. It is only natural for a parent to strive to send their child down the right path. No one would begrudge you that sentiment, Uncle Ip. You need not worry. You seem quite young, Mr. Zhongli. Yet you speak with such wisdom.
Perhaps I have misjudged your age. Your words are too kind. Truth be told, one of my old friends has several grown daughters. Rather than fretting about their future, however, she prefers to let them find their own way. Then she is more easygoing than I could ever be. I fear I lack such an open mind. I meant to say earlier, there is no need to be so polite. Feel free to call me by my name, Ipdak. Sure. So, do you also think I fret too much, Mr. Zhongli? That's not exactly what I was hoping to convey. Only a fool would ask a parent not to worry about their child. But think of it this way. Raising a child is not unlike flying a kite. Hold the string too tight, and it can no longer soar. As my friend once said, if your children are aiming for the stars, clipping their wings will only cause them to come crashing down. You need to let out the line for a kite to soar. It seems I was too stuck in my ways. You need not reproach your heart for caring. You simply need to loosen your hold a little. Indeed, with such a big heart, why not allocate the time you usually spend worrying about Gaming to the pursuit of other things, like going for a stroll, drinking tea, or taking in the scenery? You never know what surprises could be in store. Things can change in the blink of an eye. The blink of an eye, you say? Do things change so quickly? Children grow up in quite the same way, do they not? Day after day, year after year, sometimes in the blink of an eye, but always when you least expect it. As a father, I'm sure you know that best. Yes, you can say that again. 1 second, Gaming was a kid. The next thing I knew, he was ready to fly the nest. Zhongli certainly has a way with words. Oh, Gaming is back! Hey, Gaming, we're over here! Dad, Traveler, Paimon. Good, you're all here. Oh, and Mr. Zhongli from the Wangsheng Funeral Parlor? You're here too? A fated meeting indeed. We were just enjoying some pleasant conversation. Is everything resolved? Well, you could say that. What does that mean? Traveler, Paimon, come with me. I need to talk to you. Huh? Oh. I'll come right out and say it. Those two bandits, you sent them, didn't you? So that's how we're starting off? Can't look me in the eye, huh? Guess I'm right then. Okay, but how did you know? At first, their mannerisms seemed a bit stilted. But once I got close, it was obvious that they possessed great skills. I was right on their tail, and it should have taken only a few steps to catch up to them, yet somehow, I was never able to close that distance. People with that level of skill would have gone about things differently from the start, like sneaking up on us while we were distracted. Unless, of course, their real motive was to lure me away from the group all along. Wow, you're pretty quick on the uptake. I just have a lot of experience. I've dealt with many a ruthless bandit in my time, but I've never seen ones like them. In the end, I told them they would make good guards if they ever wanted to get back on the straight and narrow, and that they could hang out with me in Liyue Harbor anytime. You ever consider you might be a little too good at making friends? I'm guessing you guys were trying to help resolve things between my dad and me? I appreciate it, I really do, but this conflict between us has been going on for a long time. Even if those two were real bandits, and I was able to subdue them and show them what I was capable of, it wouldn't change anything. You've seen the way he talks to me. It's not like that at all! Your dad really cares about you. You should see the way he talks about you when you're not around. Zhongli was talking things through with him, and he nearly agreed to let it go. You don't believe us? He won't let it go. He can say as much as he wants to other people, but he won't talk to me. I'm certain of it.
You told us you wanted to prove yourself to your dad. Why don't you tell him about all the hard work you've done these past few years? Will that even do anything? I'm not sure talking is enough. You won't know unless you try. Just like how you won't know if something is delicious unless you taste it. Listen to us. It's time to put these people skills to good use. You can make friends with anyone, so why not your dad? I'll do my best. You are very knowledgeable, Mr. Zhongli. I'm impressed. Despite my being in the tea industry for several decades, it seems I still have much to learn about the art of tea tasting. You flatter me. It was nothing but a few humble musings. How much tea have you drank since we've been gone? Ipdak and I have found many a common interest. Our friendship, much like a cup of tea, seems to grow stronger the longer it has to steep. Well said, Mr. Zhongli. Gaming, Mr. Zhongli is very knowledgeable. You should take the opportunity to learn from people like him when you're in the city. Huh? Oh, of course. Zhongli? I have very much enjoyed our conversation, Ipdak, but I, unfortunately, have some unfinished funeral parlor business to attend to. Oh, I hope I didn't keep you. My apologies for taking up so much of your time, Mr. Zhongli. No need to stay on my account. When you're less busy, let's find a time to meet. I'll treat you to dim sum. It would be an honor. We'll see you off, Zhongli. You two have a nice chat, alright? Thanks for helping us talk things through with Uncle Ip. Good thing you were able to pick up on what we were putting down. I have been around the both of you for some time now. You could say I have a certain level of expertise in that regard. As for my role in the conversation, think nothing of it. I hardly did anything noteworthy. You never change, do you? Why did you have us walk all this way? Paimon thought we just had to go far enough to be out of earshot. A friend approaches. Hello. So, you're here too? I've been here the whole time. A ghostly kite. Could that elusive Director Hu be coming to Wangshu Inn once again? What is she doing here? I suppose it matters not. Given her relationship with Rex, well, Zhongli, I might as well go pay my respects. It's you! I thought you were Director Hu. Ah, your arrival is most fortuitous. Do you want to try out this new gadget? The addition of the power source makes the takeoff more stable. It's just that... He seems quite immersed in the study of this device. I fear it's almost too stable. It completely negates the pleasure of seeing one's kite sway with the wind. It's a bit of a shame. In truth, I'm here because Director Hu dispatched me to purchase some items in preparation for Lantern Rite. I see. Much like she does every year. Much like she'll do next year, I would imagine. Am I wrong? Or has she once again sent you out to buy, what is it, sesame oil or something? While we're on the subject, I do wonder why she is so obsessed with using sesame oil in the preparation of mixed vegetable dishes for Lantern Rite. A recommendation from Xiangling, perhaps. What do you think, Xiao? I've only met Director Hu a few times. I'm hardly the best person to ask. Ah, and is that not a sign that you should visit Wangsheng Funeral Parlor more often?
It wouldn't hurt to grace the parlor with your presence now and again, when you are otherwise unoccupied. This one here is a traditional kite, one without any equipped mechanical device. Director Hu tasked me with studying the differences between the two to determine which one is of greater merit. Many hands make light work. Perhaps you could test out the other kite for me? All right. I have made my comparisons. If speed is what you're after, the mechanical kite is the better choice. Wonderful. I shall pass that information along to Director Hu. I'll leave these 2 kites with you. Perhaps you can find a few friends with which to partake in the activity. You might find it to be an enjoyable use of your time. Oh, wait. Who enjoys kite flying? Well, I would imagine someone of your talent and wisdom is more than capable of finding out. So, you were testing out the kites for Hu Tao and even roped Xiao into doing it for you? Paimon didn't ask earlier because the situation was, I would hardly say I roped Xiao into anything. I simply sought the help of a friend. Besides, we did the testing together. Seems like our pool of competitors is growing. Do you like kite flying, Xiao? I suppose I neither like nor dislike it. Although, watching a kite gradually ascend into the sky does bring me a certain peace of mind. Perhaps they're a bit like Xiao lanterns in that way. Kite flying is also a pleasant form of relaxation. Have you ever thought about making a kite, Xiao? Cloud Retainer taught us how. We can teach you if you want. There's no need. Menogius was the only Yaksha among us who had an interest in matters of ornamentation and design. When Lantern Rite is over, come find me near Pervasi's temple if you have the time. It's getting late. I should go inform Director Hu of our findings. How's she been, by the way? Be sure to say hi to her for us. The last time I spoke to her, she mentioned that she would be visiting Chaoying Village in a few days. If you have the time, perhaps you could also make the trip. If you happen to run into her, you can pass along your regards in person. We'll keep that in mind. Take care, Zhongli. See you later. See you next time. Coming. You can go first. I don't have anything to say. Then I'll go. I still don't want to leave Liyue Harbor. Oh. I can't say I support that decision, but... Hey, let me finish before you get all worked up. Sit, Shenhe, sit. You must be tired from your journey. Shall I pour you a cup of tea, or would you prefer something else to drink? No need. I'm not tired. They're gone, Master. Perfect. The time is nigh for us to make an appearance. Do you remember the plan when recounted to you? Yes, Master. We aim to give them a demonstration of familial love. So I'll have whatever you are having. All right. What are Auntie Xianyun and Shenhe doing here? Just how many people are involved in this scheme? I suppose all I can do is just take a seat and see what happens. Perfect. I just so happen to have bought some Sunglow tea recently. It's quite the delectable variety. Or it would be if one has not been forced to drink it every day in the hopes of whittling down one's considerable stash. One has more than had one's fill already. Oh, forget it. Such thoughts detract from the present need to keep up the conversation. Has work been busy during the holiday season? Do you need my help with anything? Drunk guests can sometimes cause trouble, but I deal with them as you taught me, by pinning their heads against the table. Are Auntie Xianyun and Shenhe serious right now? Oh dear. While one was busy orchestrating this act, one seems to have forgotten about Shenhe's various eccentricity. What I meant to ask was, have you made any new friends?
We live so far from each other. It would be a great comfort to me to know you were surrounded by good companions. You already know of my past circumstances. Recently, I've been conversing with Guoba in the kitchen at night. Guoba can't talk, but his companionship is a comfort. The poor child. Her one friend can't even talk. I guess maybe Gaming is not doing so bad after all. Perhaps I've been too hard on him. Let's move on, shall we? Do you have any plans for today, Shenhe? How about we do something fun? That sounds about right. Take her to do something fun, and perhaps she'll loosen up a bit. Like we used to do when we would carry stones up and down the mountain from dawn until dusk, picking herbs to eat for dinner along the way? If that is what you ask of me, then that is what I shall do. Dad, here, have some tea. Or no, wait, best not have any just yet. Yeah. I simply can't listen to that any longer. Coming. I'd like to finish what I was trying to say before. I don't support your decision to stay in Liyue Harbor, because living there is too hard on you. If you come home, there will be people to help you. I'm not saying we have to live under the same roof. I know our personalities are too similar to avoid butting heads. But you'll have your entire family around you. Your aunts, uncles, they'll all do whatever they can to help. You could get a less taxing job, and we could grab dim sum together from time to time. Huh. I didn't know dim sum was such an important affair, Master. Shh. Just think about it, okay? You don't have to decide now. Dad really has changed a lot. He would never have said these things to me before. But thank you, Dad. It's been long enough, don't you think? Oh, Paimon sure hopes they've made up by now. Oh, they're drinking tea in silence. That's not a good sign. Did Xianyun's plan not work after all? Hey you two! Paimon's sorry we were gone for so long. We got to chatting with some friends and didn't realize how much time had passed. Perfect timing, actually. We seem to be just about done here. Yep, let's go. I'll get the bags. Gaming has grown a lot taller, hasn't he? हाँ बने बस आपको वेट कर रहा हूँ You must be Mr. नहीं Ip. आधा घंटा नहीं Thank you for हुआ coming all this way. My name is Charlotte, and I'm a reporter from Fontaine. You can find me writing for the Steambird. I invited you here not just to purchase your fine tea, but also with the hope that you might be willing to sit down for a short interview. What do you say? An interview? To advertise my teas? I suppose you could think of it that way. We Fontainians are big tea drinkers too. The Fontaine Market. Then I'll need some time to adequately prepare. Perhaps we could sit down and discuss the questions you intend to ask in advance. Of course, of course. Please follow me. Is this person also involved in your plan? And here I thought I had lots of connections. I suppose I've been humbled. You sure know all kinds of cool and important people. Over here! Yoo-hoo! Over here! Huh? What? Auntie Shenyun? She probably wants to talk about the next phase of the plan. Let's go while your dad is still distracted.
I take it that all is going well? Don't worry, Xianyun. Everything is going according to plan. I knew it. I knew that was all an act earlier. Auntie Xianyun is really something. She was so determined to help me. She didn't even care about making herself and Shanka appear foolish in front of my family. She truly knows how to look out for others. I still have a lot to learn. As for the next step... Oh no! What's wrong, Gaming? Don't tell me you're the ones footing the bill for all that tea. I can't let you do that. Fret not. Reimbursements will be made. Exactly! Think of it more as an investment, as Ningguang would say. We pulled together the Mora so that Charlotte could place the order. She's gonna bring it back to the Steambird as a gift, as well as a sample of the regional specialty. Fontanians will probably fall in love with your dad's tea as soon as they lay their eyes on Charlotte's article. And once all the money from the new orders begin to roll in, getting our Mora back will be a piece of cake. Oh, okay. Business-related matters always seem to go over my head, but I refuse to let you all lose Mora on my behalf. I'll pay you back right now. We can talk about such matters at a later date. There are more important matters for you to consider at the moment, are there not? Yes. I've been thinking about it the whole way here. I have an idea, but I'd hate to cause even more trouble for all of you. That is for us to decide. Yeah, we're all friends here. Plus, we wouldn't be here if we didn't want to help, right? Just tell us about this idea of yours. Okay. Whew. So, it's like that. Got it! Just leave it to us. Let's split up and make it happen. We need to do those things we talked about, but we also still have the kite flying competition. Since Xiao already tested out those kites for us, why don't we also go buy one of those mechanical thingamabobs or whatever they're called? We can attach it to our kite! Welcome back! I see you returned from your trip. I really do have to thank you for all your help from before. Thanks to you, my daughter was able to build a kite with her grandmother that very same day. She even wrote a long letter telling me how much she loved it. Oh, you should really be thanking Gaming, not us! I'll be sure to. And are you here to buy a kite? Please, take your pick. Oh, we already have a kite. We wanted to buy one of those, device thingies from Fontaine. Do you sell them separately? Yes. Here you go. Please, take it, free of charge. The directions are in the box. It's not hard to install at all. It doesn't feel right for us to just take it. Well, nor would it feel right for me to take your Mora. Good luck in the kite flying competition. I'll be rooting for you. All right then, thank you. Phew, it's done. Let's get down to business. Looks like we finished everything we needed to do. Let's find a good place and put this thing into the sky. Chi-Chi, we're almost there. Okay.
me. The lantern rite is as festive as ever! Huh? Oh, what's going on? Did something happen? What should we do? Oh, should we get the Millilith? What's that? Have I taken that many pictures already? I need to load more film. Wait, the wind. Oh my gosh! Mommy, I want a big kite like that too! Do you see that kite way out in front? It's so beautiful! Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite. Gaming's performance was so cool, Paimon almost wanted to join in! You saw that, right, Traveler? Let's go find him! Oh, he's over there! Talking to his dad! I think I'll head off now, if that's okay? Thank you, little girl. Do you want us to walk you back? No need, no need. Master is waiting for me right over there. Dad. I suppose I'll go first this time. Okay. Your performance. I've seen many wuxia dances in my time, but
I've got to admit, what you pulled off there was breathtaking. Wow. I never thought I'd live to hear you say that. You're serious about doing this professionally? Absolutely. I know it'll be difficult, but... Then it doesn't matter. What I mean to say is, of course it'll be difficult. But if that's your decision, if that's your dream, then it doesn't matter how difficult it is. As long as you put in the work, then any obstacle can be overcome in time. Really, when I was young, I also... Actually, how about we save that story of my past for another time? All I really want to say is, I've changed my mind. Much like this kite, you also deserve to soar to new heights. Dad. Son. Son? Haven't heard that in a while. I bet you're wondering what's gotten into me saying all this. Well, a little bit, yeah. Anyway, I know I've never found the chance to say this before, but... to me, Gaming, you've always been a great kid. Alright, that's everything I've got. Did you have something you wanted to say, or...? Seeing the two of them talk things through like this really gives Paimon a sense of accomplishment. Now go. Over there. Your friends are still waiting for you. Huh? But you came all this way. I'll be staying in Liyue Harbor for a bit longer. When you have time, we can grab dim sum together. Your treat, right? Dad, honestly. Go. Okay, then I'm off. See you soon. That's quite the smile you've got there, Gaming. It's nothing to be embarrassed about. I'd like to find and thank Auntie Xinyun, as well as everyone else. Welcome back, Daving Song bhai. Kaise If ho? everyone has time, maybe we could all get together and go fly a kite. हाँ मैं देख रहा मैं देख चुका हूँ right? इतना 50 चाहिए इतना अब तो इतना बिका हैंगओवर हाइडर डेंजर भाई कैसे हो? अभी तो 40 होगा हमें भी अरे ये सब बेस्ट कैरेक्टर क्यों पूछता है भाई सब बेस्ट कैरेक्टर What is your best character in this game? Kazuha bro. Kazuha. सबको पसंद है कौन भाई ये क्या बात है भाई मैं क्यों नायरा है ना भाई और ये यार मेको से हो जाएगा
कुछ नहीं करिए, मैं सब संभाल लूंगा। आप बस वॉच करे तो यहाँ कौन कर दिया वहाँ से। बहुत कितना सब मार्क करते रखे हो भाई, छोटा छोटा। हाँ, मैप में इतना सा जगह में मैप माइनिंग का वो सब का। अच्छा इसमें, अच्छा मेरा वाला सॉरी मेरा वाला मार्क दिख रहा होगा। छोटी बच्ची आ रही है टेर पे थोड़ा सा। What's the hurry? An assassin from our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Chingsa. Coveting the shapes of the living, pure water can take on many forms. In this way, shall water deliver your punishment. I wonder when I'll be The power of water is its ability to take any shape. Without solid ground, terrestrial creatures become simply helpless. नमस्कार निक गेमर भाई, कैसे हो ब्रो? आप चैट बढ़ा आपका, वॉचिंग कम हो गया बस। The power of water is its ability to take any shape. Oh, so sorry. I see everything. Emerge. वाह क्या चमकदार। One who is ignorant of water's treasures क्या कर रहे हैं आप घूमिए बस। comprehend its horrors. घूमने आए, घूमिए। Emerge. Right here. Right now. Freeze! Let's see what happens when you lose your foothold. Cool it! नहीं निकला तो मैं पर ना वो है न्यूबिलेट का वेपन, न्यूबिलेट निकल जाएगा तब मैं दे दूँ। The power of water is its ability to take any shape. As long as rain falls and rivers flow, water will exist मेहनत का बहुत तो लाना पड़ेगा। तो ये ऐलान और उसको लेता हूँ जोंगली को। इसको कितना मारना है? हो गया। बोल रही है मैं अभी हूँ तो कर दूंगा आपका भी। आप मेरा मदद करते थे, इस बार मैं मदद कर रहा हूँ आपको। चलो पार वाले में चले थे। चलो आप वहाँ पे बस टीपी में लीजिए, मैं बस आ रहा हूँ। I didn't know you were such a खत्म slacker. करना बुलाऊंगा आपको। गेम छो बिड़ू की मजा में ब्रो। वहीं पे आप लीजिएगा, वहीं पे मैं जब खत्म होगा तो आप आइएगा। यहीं पे लीजिएगा, अंदर नहीं जाइएगा।
हाँ कैरेक्टर चेंज कर लेंगे। हाँ हाँ और बताते जाइए। ये देख सिंचो इज रेडी। सिंचो मेरा सिंचो कपड़ा पहना। चलो मार के अब चल भी गए। वाह मैं मना किया था आपको आने के अंदर। कोई आप दूर से वॉच करिए बस। सिंचो आ रहा हो। नहीं मैं नीचे से आया हूँ। मार चुका मैं। मेरा ऐलान से एक की बस मारा खत्म हो गया। क्या हो सकता है? बताओ निक गेमर भाई क्या चल रहा है आजकल? हाउ इज योर कॉलेज लाइफ? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या मेरे को कैरेक्टर थोड़ा चेंज करने लगे। और इनको को दोनों रखते थे। क्या An assassin from our homeland, इसको क्या or a किन्ना लो fool who trespasses upon the waters of Chainsa. Coveting the shapes of the living, pure water can take on many forms. In this way, shall water deliver your punishment. अब बहन है हम बता देता है। Freeze. मार तो देंगे आपको। The power of water is its ability to take any shape. मदद करें। ये है छोटा सी Propagate! Without solid ground, terrestrial creatures become simply helpless. ये देखो बहन कहाँ है मेरी बहन? अच्छा बात है। The power of water is its ability to take any shape. Cool it. Oh, so sorry. Come on now. Dodge this. One who is ignorant of water's treasures fails also to comprehend its horrors. Emerge right now. Freeze. I'm always watching. Scatter. Let's see what happens when you lose your foothold. ओह नहीं लगा ज़्यादा क्योंकि मैंने नोबलेट का वैक्यूम दिया नहीं होगा The power of water is its ability to take any shape. Dodge this. As long as rain falls and rivers flow, water will exist forever.
There are a total of 10 captains. Seems all the other... मेरा तब लोडिंग में देखो कितना टाइम लगेगा। अरे वो भी टीपी में ही है हूँ अभी। यही ड्राइवर यही मेरे को सीमा कर Shumanter, हो गया। Thank you so much. My travel is very strong. सबको मनाते रखा हूँ भाई। मनाते मैं ट्रैवल कोई रिपोर्ट मना। क्या लेनेट को बॉस को माने? लोगों से। यार डोमेन क्यों नहीं कर रहा अभी इसमें डोमेन अंडर डोमेन में 40-40 है। उससे भी अब बढ़ जाएगा आपका। दस नहीं 40-40 का भी है भाई। 40 पर I didn't know you were such a slacker. Race you! चलो अपना एंगल डैमेज दिखा दिया फर्स्ट क्लास स्टैंडिंग। मारना नहीं बोला भाई। चलो हो गया जी। Nice and spicy! What's the hurry? This moment will be frozen in time. Dodge this! Scatter! कन्वर्ट वाला नहीं है। कल 14 है भाई कल लिखिए। अरे एक मिनट आप टीपी कर सकते हैं। कहीं पर टॉन लॉक है। चलिए ना Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all. इसका हो जाएगा। लेनेट का वो काम करना पड़ेगा आपका रोबोट। तो यहीं पे
नहीं वो पहले से वो नहीं, अब हो गया, अब वो अपडेट में चेंज कर दिया ना भाई। स्टैचू ओपन कर, नहीं सुन, ऐसा स्टैचू ओपन करे पहले। मैं अरे पीछे पीछे स्टैचू पीछे है ये यार, देखे देखे ना पीछे, यहाँ पे बॉस है, यहाँ पे इधर द फाउंटेन, फाउंटेन जहाँ होता ना अपग्रेड वहीं पे है। पर आना चाहिए। अरे डे एंड आ रहा कुछ नहीं है, पर चाहिए, आइए ना बस। रुको मैं लिफ्ट कर रहा हूँ ना भाई। What's the hurry? अरे इसका छोड़े, इधर आइए मेरे पीछे पीछे आइए, चलिए आइए पीछे पीछे देख, वो देखने बोल रहा है, ओए वो देखने बोल रहा है आईडी जो दिया था। भाई मैं एक मिनट भाई, इस देखो एक सेकंड। नहीं अभी जस्ट आया ना ये, चैट में देखना तब तक मैं पोस्ट कैरेक्टर इधर ही है भाई, इधर आना है भाई, साइंटिस्ट आप आइए ना भाई। अरे मेरे को पता है हमसे जाना, हम जानते हैं तो कैरेक्टर What's the hurry? इजी है, इसे कर दी। हाँ अरे चाहिए ना भाई, हो गया, बहुत सामने ही है, इधर है। रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे कूद कूद के? यहीं उसका नीचे ही होगा। दोनों है भाई, बंदा लड़की दोनों है। रुकेगा, ऑप्शन स्विच करने से पहले मेरे को रुकेगा। रुके ना, मैं बताऊंगा। मेरे आने में नहीं दिखा है। कितना स्लो चल रहा भाई, आ जाओ। रोक जाइए, मैं बोल रहा रोकने के, रुकते नहीं। मेरा पेन क्यों इतना मौसम? पर्पल चाहिए आपको? नोमिया तो यार जादू क्यों किए मेरे को पता, मैं कैरेक्टर चेंज कर, मैं आ नहीं सकता। तो किससे मारूंगा भाई, तो जब आपका भाई मैं ऐसा से मारूं। हटो। आप बस दूर में बैठिए, फोकस करिए। और मेरे को बहुत गलत नहीं होना चाहिए भाई। पर्पल देख जाइए, ओपन करते पर्पल देखिएगा, पर्पल होगा तो सही है भाई, नहीं तो मैं बैंड बजाएगा मेरा। ये है लगता है मेरे को ऊपर करना चाहिए, मैं भूल गया ना, बहुत दिन हो गया इसको। हो जाए कोई ना, यहीं पे बैठ, यहीं पे करिए ना, उसको एक्टिवेट करिए, हो जाएगा वो। नेट रुक जाए 5 मिनट। मैं मेरे को याद नहीं ना, भूल गया ना भाई, मैंने बहुत पहले बिल्ड किया था, वो भी रखी हुई है। तो कितना में मेरे लेने कर लीजिए। मैं भी कर लूंगा, चलो लगा। इंचो नहीं है इसके पास।
Seems all the other knights already have their hands full. सिंचो तो एक टीम तो ऐसे ही बना हुआ है और ये भी टीम चल जाएगा, ना जरूरत नहीं है, बस काय का हटा। हाँ मतलब काय को हटाते सिंचो लगाए तो टीम को वो भी परफेक्ट हो जाएगा। वैभव भाई ये देखो, ये जो अभी है ना, ये भी एक टीम है। ओवरलोड और मैंक्ट दोनों टीम काम करेगी इसके अंदर। अगर इसमें तुम काया के लिए सिंचो यूज कर सकते हो तो सिंचो भी चल जाएगा। फिर तो निकाल, फिर उससे निकालने लगता है। अगर तुमने गामिंग तो नहीं निकाला ना तुमने, क्योंकि ये जो अभी इवेंट है ना उससे तुमने सिंचो गेंगो, सिंचो बहुत अच्छा है। चलिए एक्टिवेट हो गया। मैं भी कर लूँ, लगे मैं भी कर लूँ। कितना चाहिए? 12 चाहिए मेरे को। What's the hurry? आप नहीं करें तब तक मेरे को करने दे, आपका लेवल कम है ना, तुरंत मिल जाएगा मेरे को। हाँ वही यही तो दिक्कत प्रोफाइल इतना। ओके। Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all. Stabilize! ये फेस हट जाएगा ना, मतलब सेकंड फेज में तो पूर्ण नहीं करूँगा। सेकंड फेज में पूर्ण नहीं करूँगा, सीधा उसमें नो हो जाएगा। देखें अब एक बात करते देखें, ऊपर लड़की वाला फोटो में वो लड़का वाला फोटो था, क्या वापस आने वाला? ओके चलो, हाँ आ गया हूँ। अब इजी आपको टेलीपोर्ट करने इजी दे दिया भाई, बगल में टेलीपोर्ट ऑर्डर दे दिया, छोटा सा टेलीपोर्ट, तुरंत आप टेलीपोर्ट कर। अरे वो उसके चलते, अरे उसके चलते आपको इनके चलते दिया है जल्दी पहुंचाने के। वैभव भाई अभी तो मैंने बताया था तुमको टीम, तुम कहीं गए हुए थे क्या बीच में? अभी तो बताया मैंने। What's the hurry? यही लोग होते हैं रोबोट भाई, यही लोग होते हैं। नहीं ठीक है, सॉरी भाई। एक टीम तो तुम्हारी ये है, ठीक है? एक टीम तो सिंचो था, तो नहीं निकाला तो सिंचो ने भी कर लीजिए, अच्छा है। काया और इसमें ये सेम टीम है, ये यूज कर सकते हो। इतना हाँ जल्दी आ जाइए, मेरे को अपना अभी निकलना, खाना खाने के बुला। तो वैभव भाई तुम ना एक काया और ये जो तुम्हारी अभी 4 कैरेक्टर्स है ना, इनका एक टीम है मैंक्ट टीम, वो यूज कर सकते हो। ये सेम टीम जो तुम्हारे सेट पे दिख रही है अभी तुम्हारे प्रोफाइल में। और या फिर तुम काया की जगह सिंचो यूज कर सकते हो, ये कर सकते हो। अगर तुमने ये गामिंग जो कैरेक्टर है वो तुमने विश से निकालना तो ठीक है, वरना अगर सिंचो निकालो तुम उससे कैरेक्टर जो अभी फ्री 5 स्टार 4 स्टार मिल रहा है उसमें सिंचो निकालूंगा। और ये उससे गामिंग निकालना तो वो गलती की है उसने। अगर गामिंग उससे निकालना तो भाई गलती किया तुमने, क्योंकि मैं गामिंग नहीं निकालना था।
गामिंग तो तुम्हें विश से भी मिल जाता, तुम्हें सिंचो निकालना चाहिए था। सिंचो, गामिंग, शांगनिन और कुकी, या फिर काया, गामिंग, सिंचो और शांगनिन। ये भी यूज कर सकते हो प्राइज एंड बैंक टीम। तुम्हारा ये एडवांटेज होगा, तुमको ना किसी तरीके से तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि तुम्हें काया की जगह सिंचो रखना है उसमें। ओके यार नाइस, काया की जगह सिंचो रख दो तुम्हारी टीम में बस। और गामिंग, शांगनिन और कुकी वैसी रहेगी, बस काया की जगह सिंचो रहेगा तुम्हारा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। और अगर तुम्हारे पास सिंचो नहीं है, अगर तुमने गलती से सिंचो की जगह तुमने गामिंग या कुछ और लिया है, तो तुमको वेट करना पड़ेगा। फिर तुम उसमें वो डाल सकते हो, नीसा डाल सकते हो, ओवर मोड कर सकते हो, नीसा या फिर कोई भी नक्टो कैरेक्टर। नेटवर्क तो वो टीम भी चल जाएगा उसका, वो जो भी तुम्हारे प्रोफाइल पे वो भी टीम अच्छी है। गामिंग निकालना है ना, तो तुम सिंचो निकाल दो, तुम उसको फिर सिंचो निकाल दो और तुम सिंचो, गामिंग, शांगनिन की टीम बनाओ कुकी के साथ। ओवर मोड और वेपराइज टीम बहुत अच्छी है। उसने कुकी का तो बिल्ड करने में मुश्किल हो जाएगा उसको, अभी के 40 तक खींचेंगे मैक्सिमम। अरे तो हीरा के वो आगे जाते आप गेट करने में मुश्किल हो जाएगा, उसको वो करना पड़ेगा, क्रांजियम ओपन करना पड़ेगा। टेप पे करिए, आइए। वही उसको ही मानना है मेरे को, वही हमको भी चाहिए भाई। दो ही मिनट है, वो कितना मिलेगा? अच्छा आईडी चेंज, एक बार और मान लीजिए, उसका आईडी चेंज कर लीजिए। रुको इतना सॉस करने ना, रुको सिंचू, वो सिंचू लेकर आ रहा अपना सॉस करने के। एक शॉट मारेगा वो, आपका पास भी नहीं, मेरा पास भी है सिंचू। स्क्रीन वही लेने था ही चाहिए मेरे को। अच्छा वेपन वो है, मैं देखा अपना वेपन। सिंचू जी वेपन ही नहीं है, वाह। और वेपन ही कहाँ से मिलेगा वेपन? और 3 स्टार वो भी नहीं मिला भाई, वो तो वो वाला तो मिलता नहीं है। मैं देख लूँ, What's the hurry? मेरा सिंचो का बस जो है ना, मजा है। स्टार्ट Let me weave your hair. Here comes the cat. Will be frozen in time. Witness the power of Gua. Freeze. ये देखो मेरा सिंचो का बस क्या है, देखो कोई भी मिस्त्री पे कोई भी बैठा दूंगा, मेरा कोई दिक्कत ऐसी नहीं करूंगा भाई, एक डी अच्छी नहीं करूंगा। हो गया ना आज का, तो आपका हो ही गया। हाँ मैं बाहर निकल गया।
What's the hurry? रुको मुझे मेन आईडी स्विच करने दो वैभव को 1 मिनट। तो बताए थे। कैसे यूज करने का मन हो रहा है। रुको टीम में को क्या। देखा हूँ मेरे को टीम पर क्या यूज करना को। और कहाँ कोके कहाँ है मेरे को टीम मेरा रेडी। ये टीम चलाऊंगा बहुत टाइम होगा लेने को। तो टीम तो पे ना जा। मिस पीटर पकड़ मिस पीटर गरीब आराम नहीं पकड़। अब भाई तेज डैमेज आ अटैक है भाई कुछ भी दे भाई उसको भी दे सकता हूँ मैं। अब बोल क्यों आप वो क्यों सकते वैसे भाई निकाला हूँ भाई तेज डैमेज आ वेपन निकाला तो यूज करूंगा। क्यों जेलसी हो रहा है आपको जेलसी हो रहा है भाई। नहीं हर बार बोल रहे भाई बात पे रहे तो भाई फिर डैमेज आया वेपन है भाई तो करूंगा। वेपन है मेरे भाई बहुत सारा भाई। सिंचो का पास है भाई सैक्रिफिशियल शॉट है भाई। आप भाई चिंता ना करिए रोने का बात नहीं है मेरा सिंचो। अरे मैं सब मेहनत मेरे पास है भाई मेरे तो कॉन्फिडेंस से पहले आप मेरे पास है। वाह क्या बात है। Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. कल का क्या प्लान है भाई। ओके चलिए ठीक है तो मैं भी निकल रहा हूँ। मैं भी खाने का टाइम मिलते ना कल मिलते ना। It's pouring out here! Oh wait, the water levels aren't rising, are they? Right. Stabilize!
Illusion shattered! One with nature. Clear weather all brightened. It's the heart. Time to go. Solidify! Gather! Show a new trade! The wind knows me. Let my name echo in song! As one with wind and cloud. हेंगो इशू भाई, कैसे हो ब्रो? कैसा है भाई? और कैसे चलनी जिंदगी भाई? Time to go. Add. There's a strange wanderer near Wolfendom.
Time to go. Time to go. Time to go. Stabilize. Strike a pose! Shine down! One with nature. A fateful offering. हैंगो शुभम भाई कैसे हो? Time to go. वो हैंग कर दो। हाँ बताओ भाई कैसे हैंग चाहिए तुम्हें? भाई ऐसे पजंग ना बहुत दिमाग खराब करते हैं। Treasure. One way. Draw your target out of hiding.
I will have order. Busted. Our bond is strong. RTB वो कैसे हैंग चाहिए बताओ तो सही। Wait. किसी बॉस से फाइट करनी है क्या? कोई बॉस या डेंगी वीकनी कुछ वीकनी बॉस है क्या? मैं हैंक कर सकता हूँ। The wind knows me. Time to go. Time to go. So I can go find Rana. Gather! Researching human physiology is so interesting. It's much better here. I'm running around for some reason.
Shower me with praise! Solidified! One with nature. Stabilize. Time to go. Gather! A new punching bag. Yoo-hoo! The wind knows me. There is no escape! Finally done. You are not welcome. Another test. Stabilize. Now you shall perish! Illusion shattered! You want this one? Into the wind. Time to shine! Yoo-hoo! Brings a smile to my face.
Time to go. Stabilize! One with nature. The wind knows me. Time to go. 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 Follow the wind. Time to go. Who says there aren't benefits to a life of wandering? Time to go. Time to go.
go. Brings a smile to my face. Time to go. Time to go. Into the wind. Yeah.
Time to go. Time to go. Gather! There is no escape! A fateful offering. One with nature. Solidify! Wind Strider. Gather! Shine down!
Into the wind. Time to go. Solidify! Gather! Stabilize!
Like that gather. Fateful offering. Stabilize. There is no escape! But a momentary distraction. Under all silent.
Taking a stroll in the middle of a downpour. Gather! Solidify! Gather! Stabilize! Stand with me! Game's up. Time's over. Going out on a rainy day is the worst. Don't let any of it roll away now.